बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नेशनल इकोनॉमी डायलॉग। आज का ये डायलॉग एक एपॉलिटिकल सीरीज है जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान किस क्रिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। और ये ओवरऑल डायलॉग हमारे पास लेके आ रहे हैं कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप एंड नटशेल। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप पाकिस्तान का एक ओवरऑल व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट होने वाली एक मूवमेंट थी, जहां पे आज आपके पास बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडरशिप और एकेडमिया सारे लोग इकट्ठे हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ सकता है और एक पॉजिटिव वाइब्स किस तरह जनरेट हो सकती हैं और सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू हो रही होती है। आज के प्रोग्राम में हम शुरू करेंगे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वो थोड़ी देर हमें ओवरऑल ओवरव्यू देंगे इकोनॉमी का और उसके बाद हम उनसे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद के सेशन में हमारे पास OICCI और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की लीडरशिप होगी और उस वहाँ वो कन्वर्सेशन कर रहे होंगे बिजनेस के कॉन्फिडेंस, रिस्क और अपॉर्चुनिटी के हवाले से। उसके बाद देन वी विल कम टू द थर्ड पैनल, जहाँ पे हमारे पास कैपिटल मार्केट की लीडरशिप होगी और वहाँ पे भी एक डिस्कशन हो रही होगी कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज क्या होती हैं। मेरा नाम है सजीद असलम, आई एम अ ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर ACCA और आज मैं आपका होस्ट और मॉडरेट होऊंगा। वेलकम टू सेशन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। सर, क्या आप हम सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, थैंक यू। आपका आवाज टूटा आ रहा था, आपका आवाज मेरा आ रहा है? जी सर, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बट वी कैन हियर यू, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सो सर, अगर आप रेडी हैं तो वी विल इनवाइट यू फॉर योर एड्रेस और फिर हम काशिफ तुफैल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर एक मिनट दीजिएगा, हम दोबारा चेक कर लेते हैं। काशिफ तुफैल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप मुझसे सुन पा रहे हैं? अब आपकी आवाज ये आई है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, कभी बहुत टूटी हुई आ रही है। आई डोंट नो वेदर आपका कनेक्शन खराब है या मेरा सही नहीं है, तो मैं कनेक्शन चेंज करके देख रहा हूँ। चलिए सर, आप मीनवाइल आप क्या होता है, आपको मेरा आवाज आ रहा है? मैं भी जी, मुझे बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज इस वक्त। अच्छा, तो फिर कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग नाउ? जी सर, सो वेलकम डॉक्टर साहब और ओवर टू यू। आप अपनी कीनोट स्पीच शुरू करें। 15 मिनट का आपका एक सेशन होगा और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की साइड पे आ जाएंगे। ओवर टू यू सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। Thank you very much to Asfar and to your nutshell communications and to I guess corporate group for this invitation and to all of you for coming here and giving me a chance to interact with you. I will actually try to limit my remarks to a few minutes and then we can have a question answer session and comments and questions from the audience. And I hear that it's a very august and distinguished audience, so I'm very happy to be able to speak to all of you. गुजारिश मेरी इतनी है कि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मईशत एक मुश्किल मरहले पे है। जिस दिन मैं वज़ीर ख़ज़ाना बना उससे 1 या 2 दिन पहले जब ये बात इमिनेंट थी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके थे कि मैं वज़ीर ख़ज़ाना बनूंगा, तो सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने मुझे आके एक प्रेजेंटेशन दी। तो उनका ये ख्याल था कि जो तखमीना था पाकिस्तान का वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट का 5600 अरब रुपए का डेफिसिट था फेडरल गवर्नमेंट का, विच ऑब्वियसली इज द हाईएस्ट एवर इन पाकिस्तान। वफाक का 5600 का डेफिसिट था, 500 अरब रुपया उस पे हो जाता सूबों का सरप्लस, तो वो मिलाकर पाकिस्तान का डेफिसिट 5100 अरब रुपया बनता है, जिसके अंदर कोई 3700-3800 अरब रुपया जो था वो डेट सर्विसिंग का था। अगर उसको निकाल दें तो 1300 अरब रुपया प्राइमरी डेफिसिट था।
یہ 1300 ارب روپے پرائمری ڈیفیسٹ تھا، جبکہ IMF سے جو دسمبر میں 6th ریویو ہوا تھا اس میں اگریمنٹ ہوا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ 25 بلین کا ہوگا. تو کہاں 25 بلین کا ڈیفیسٹ تھا اور کہاں پروجیکشن تھی 1300 ارب کی، جس کے اندر 6100 ارب روپے کی وہ بھی لگی ہوئی تھی، آپ کے 6100 ارب روپے کی ریونیو کا بھی اسٹیمیٹ تھا، جبکہ ایف بی آر میں صرف ریونیو 5850 کا دیا ہوا تھا، لیکن ایف بی آر سے جو اگریمنٹ کرا تھا IMF کا وہ 6100 کا تھا. اور جو 1300 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں IMF نے ون ٹائم ایڈجسٹر دیے ہوئے تھے ان کو دو چیزوں کے، ایک ویکسینز امپورٹ کے اور ایک IPPs کو پیمنٹ کے، تو تقریباً وہ 700 بلین تھے. تو اس سال کا جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا وہ 2000 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا. اور اس کو اگر آپ کچھ پیمنٹس روک بھی سک لیں، SSGC کی کوئی پیمنٹ روک لیں، SNGPL کی کوئی پیمنٹ روک لیں، کچھ PT دوسری سپلیمنٹری گرانٹس روک بھی لیں، تو آپ کا یہ 1800-1900 ارب روپے سے کم کا 1700-1800 ارب روپے سے کم کا پرائمری ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہے 5000 ارب سے زیادہ ہوگا، وچ obviously is record in terms of nominal numbers. اینڈ اگر 5000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے ایٹ 65,000 بلین کی GDP پہ، تو یہ تقریباً 7.5-8% ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے لیکن زیادہ میکسیمم نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو 1918-19 میں اسد عمر صاحب کا جو سال تھا اس میں 9.1% وفاقی بجٹ کا ڈیفیسٹ تھا، جو کہ پاکستان کا ریکارڈ تھا. اس کے بعد اگلے سال 7.1 ہوا، پھر 8.1 ہوا، اور اس سال میرے خیال سے 7.8-7.9 ڈیفیسٹ کریں گے نئی GDP کے حساب سے، جو کہ 10,000 ارب روپے سے بڑی ہے. اگر پرانی GDP کے حساب سے کریں تو تقریباً 9-9.5% ہو جائے گا. تو ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. جو دوسرا جو میں آیا تو ظاہر ہے کہ فنڈ کے پاس بھی گیا، میں فنڈ کی اسپرنگ میٹنگس تھی تو میں چلا گیا ادھر. تو میں نے کوشش کری کہ فنڈ کا پروگرام ریوائیو کر لیں، کیونکہ پاکستان کو اگلے سال 21 ارب ڈالر جو ہیں وہ صرف قرض کے لوٹانے ہیں، 21 ارب ڈالر پلس اگر آپ کا 10-12-15 ارب کا جتنا بھی ہے، 10 سے 15 ارب کا لیس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، تو 21 + 10 تو 31 ارب کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. پلس آپ کا صرف 10.4 یا 10.3 بلین فوریکس ریزروز تھے، تو وہ اگر بڑھانا چاہیں 5 بلین کے آپ کو 15 تک لے کے جائیں، تو آپ کو پھر وہ 36-37 ارب ڈالر نیکسٹ ایئر چاہیے. یہ پیسے لانے کے لیے آپ کو فنڈ سے پروگرام میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت پاکستان کا بانڈ 70 پیسے کا ہو گیا تھا، یعنی کہ $1 پاکستانی بانڈ واز سیلنگ فار 70 cents. اب انفیکٹ وہ 65 سینٹس کا ہو گیا ہے. اینڈ سو دیٹ مینس دیٹ یو کین ناٹ گو ٹو دا کمرشل مارکیٹ، یو کین ناٹ ایشو پیپر، یورو بانڈز آپ ایشو نہیں کر سکتے، کمرشل بینک سے بھی آپ لون نہیں لے سکتے، اور صرف آپ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل سے لون لے سکتے ہیں. تو ملٹی لیٹرل سے لون لینے کے لیے IMF سے لون لینا ضروری ہے. اس کے بعد ورلڈ بینک بھی کھل جاتا ہے، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کھل جاتا ہے، اور بالخصوص ایک چائنیز ادارہ ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، جو چائنیز نے بنایا تھا ٹو کمپیٹ اگینسٹ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اور وہ ابھی ادارہ اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو کہتا ہے کہ اگر آپ ورلڈ بینک آپ کو پیسے دے گا تو ہم دیں گے، ورلڈ بینک کہتا ہے وہ IMF دے گا تو ہم دیں گے. تو ہر رستہ جو ہے وہ IMF پہ لے کے جاتا ہے. پھر ہم سعودی عرب بھی گئے تھے، دبئی بھی پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، اور دوسرے ممالک سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی پیسے سب دینے کے لیے تیار ہیں کم و بیش، لیکن ان سب کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی IMF سے ڈیل کر لینی چاہیے. جو ایک چیز IMF کہتا ہے لیکن میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے، وہ پیٹرول کی قیمت پہ سبسڈی ختم کرنی تھی. پیٹرول کی قیمت پہ سبسڈی جو ایک کہہ دی تھی ہم نے کہ ہم 150 میں پیٹرول اور 145 میں ڈیزل بیچیں گے، no matter what that price is of our import, meant کہ اب جب $117 ہو گیا کہ 15 دن کے اندر 70 ارب روپے کی سبسڈی ہے، یا 70 ارب کی سبسڈی ہے. ایک مہینے میں 120 یا 140 ارب روپے کی سبسڈی ہے. اب اگر ایک مہینے میں 140 ارب کی سبسڈی ہے بھائی، تو 3 times this is 300% the cost of running the civilian government. Civilian government آپ کی چلتی ہے 40-41-42 ارب میں مہینے کی، اور آپ کو سبسڈی دے رہے ہیں 120 ارب کی. Obviously cannot afford this. You would have gone bankrupt really. So this kind of subsidy is unaffordable, and so obviously we had to just take the bull by the horn and get away with it, and we've started the process yesterday
or day before yesterday to get away with it. And the Prime Minister was very concerned about the poor. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول کی سبسڈی دیتے ہیں تو امیر لوگوں کو زیادہ سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں. ایون ڈیزل میں بھی امیر لوگوں کو زیادہ سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں. The 40% richest households in Pakistan consume about 85 to 89% of petrol, and they also consume over 80% of diesel, which is counterintuitive, but it's actually true because they consume more, including let's say کہ وہ شیمپو کنزیوم کر رہے ہیں, سوپ کنزیوم کر رہے ہیں, تو اس کی بھی کنزمپشن کے اندر, اس کی بھی پروڈکشن میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے, whether it's transport, whether it's diesel generators, things like that. تو جو آئل پرائز کی سبسڈی, پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی, وہ زیادہ تر امیر لوگوں کو ملتی ہے. تو وہ اوبیسلی دیٹ میڈ نو سینس کہ ایوریج پاکستانی کی انکم تو 30,000 روپے, وہ آدمی سبسڈی دے رہا ہے اس آدمی کو جس کی انکم لاکھ روپے ایوریج پہ, تو دیٹ میڈ نو سینس. تو یہ سبسڈی ختم کی ہے. ہم نے 28 ارب روپیہ غریب ترین پاکستانیوں کو دیا ہے, 1,40,00,000 گھرانوں کو, which comprises of 8.5 کروڑ لوگ, which is 1/3 of Pakistan. 37 I think ان کا پاورٹی اسکور ہے. ان کی ایوریج انکم 31,700 روپے ہے, میکسیمم انکم 40,000 روپے. تو جس کی بھی 40,000 کی انکم ہے اس سے کم سب کو ہم پیسے دیں گے. اس میں 2 پروسیسز ہیں, ایک جو کہ بسٹ کے ریسیپینٹس ہیں 8.5 7 لاکھ 75 لاکھ لیس سے, ایکچولی 73 یا 73 لاکھ ہیں. 73 لاکھ بسٹ کے ریسیپینٹس کو ہم کیش پیسے دے دیں گے. ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے فون میں آ جائے گا کہ یہ آپ کو 2,000 روپے مل گئے. باقی جو نان بسٹ ریسیپینٹس ہیں ان کو ہم نے ایک نمبر دیا ہے 786. تو 1 جون سے وہ 786 پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیجیں. ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ لیڈیز کو دیں گے, آدمیوں کو نہیں دیں گے, صرف خواتین کو دیں گے. وہ خاتون اپنا ہم کو پیسے بھیج دے. وی ہیو اے سروے آف 332 ملین ہاؤس ہولڈس. تو وہ ان میں سے سروے میں سے اگر وہ آ گئے ہیں کہ ان کی انکم 40,000 سے کم ہے تو ان کو ہم فوراً پیسے دے دیں گے 2,000 روپے. جس کی انکم 40,000 روپے, جس کو ہم 2,000 روپے دے رہے ہیں, وہ اس کی انکم کا 5% حصہ ہے. 2,000 روپے doesn't sound a lot, but 2,000 روپے is 5% of that family's income. And it turns out کہ 5% is what the average Pakistani spends on transport, which includes fuel, petrol, diesel, car payments, motorcycle payments, whatnot. So that actually is a good number. It also turns out کہ سارے غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتی. ایک اسکیم تھی کہ موٹر سائیکل والوں کو پیسے دے دیں, but then it occurred to us کہ گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں, جو دیگر لوگ ہوتے ہیں, وہ کچھ لوگ دھوبی آپ کے یہاں گدھا گاڑی میں کبھی کبھی آتا ہے, جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ اب ان کے پاس تو بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم صرف انکم کا بار لگائیں گے کہ جس کی انکم 40,000 سے کم ہے, whether they own a motorcycle or not, ہم سب کو پیسے دے دیں گے. تو یہ ہم نے کیا ہے. اب رہی بات IMF سے, تو IMF سے obviously مذاکرات ہم کر رہے ہیں. اگلے سال کا IMF is asking for a very tough budget, جہاں پہ یہاں پہ 2,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا اس سال پرائمری کا. 1,300 کا تو ڈیفیسٹ ہے جو تخمینہ تھا, پلس 700 کا ایڈجسٹر دیے ہیں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تم ختم کرو اور سرپلس پہ لے کے جاؤ, which obviously not be able to do. تو وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, but those are not really big hurdles. The big hurdle was the petrol price, where we have moved, and now I think that everything else will be easy. I want to just make one comment and then I'll open this to question answers. پاکستان میں جدھر 2.5% پاپولیشن بڑھتی ہے, اور پاکستان میں جہاں پہ ایک بہت ینگ پاپولیشن ہے, وہاں پہ گروتھ لینا مشکل نہیں ہوتی ہے. گروتھ ہماری ہر سال آ جاتی ہے. سسٹینیبل گروتھ لینا جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نہ پھنسیں, وہ بڑا مشکل ہے. اینڈ دیئر وی ہیو فیلڈ, آل آف اس ہیو فیلڈ. منحاص القوم ہر مرتبہ فیل ہو گئے. اور اس بار بھی جب کووڈ کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, اس کے بعد جب معیشت چلائی تو کیا کرائی؟ معیشت چلانے کے لیے آپ نے ٹرف کے لون دیے, دیگر لون دیے, اس سے انڈسٹری لگے گی, لیکن دیٹس آل امپورٹ بیسڈ. اور وہ امپورٹ کی مشینری آئی ہے, امپورٹ کی آپ, اور پھر آپ لوکل لوگوں کو چیزیں بیچیں گے. آپ کی ایکسپورٹ اتنی کانکمنٹنٹلی نہیں بڑھتی جتنی آپ کی امپورٹ بڑھ جاتی ہے, اور پھر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں. جو ہمارا جو ٹرک ہے فائنانس منسٹری کا, اسٹیٹ بینک کا, ہمارے حکومت کا, وہ یہ ہے کہ ہم کسی اسٹیٹ کو جا کے بولتے ہیں یہ لو 2 ارب روپے ایک فیکٹری لگاؤ, اور کسی کو 20,000 کی نوکری دے دو, خدا رہا. اب وہ جب 2 ارب کی فیکٹری لگانے جاتا ہے, اور وہ مشین امپورٹ کرتا ہے, پھر اپنے بچے کو گاڑی بھی دلا کے دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت اتنی اکانومی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں یار تھوڑی سی سلو کرو. تو وہ بیچارہ جو 20,000 کی نوکری کی امید میں ہوتا ہے, یا اس کی باری نہیں آتی ہے, اور یا باری آتی ہے تو پھر مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اٹس اے ویری rich centric economic policy.
And 80% of our manufacturing is to sell to domestic market, which is a very poor market. You would think that we should want to sell to foreigners who are much richer than Pakistanis, and there are more foreigners than there are Pakistanis. But we only want to sell to Pakistanis. So that's the 2-3 things we need to change. We need to change the focus of our policy. Import-led growth na karaye, number one. Number two, we need to get manufacturing to sell for domestic, not for domestic audience, but to export. And number three, we really need to have a revolution in agriculture. हमारी हर चीज़ के अंदर yield कम है, हमारी इतने एकड़ेज है लेकिन हम wheat भी पूरा नहीं कर सकते. इस साल हमें 3 मिलियन टन wheat import करना पड़ेगा. इस साल हमें 4 मिलियन टन तेल import करना पड़ेगा, खुर्दनी तेल, खाने पीने का तेल, which is going to cost us $6 billion. इस साल हमें cotton कम से कम 5 million bales import करनी पड़ेंगी. So we are an agriculture country and we should be able to grow all these things, but we are not because our yields are very small, low, and we need to get a revolution in agriculture, and that is the first thing. And even though I belong to a city and I've never really been on a farm, but I think that Pakistan's first line of defense in terms of economy is agriculture, and we need to improve that. I'll stop here right here. थैंक यू बिफ्ता साहब. एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा एंड पे जो आपने इसका एनालिसिस किया, और यही हमारा पहला सवाल भी यही आ रहा है कि पाकिस्तान एक बूम और बस्ट के सिनेरियो से मुसलसल गुजर रहा है. सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? इनकी आवाज तो नहीं आ रही. क्या किया सर? अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप स्पीकर चेक करते हैं अपनी साइड पे, क्योंकि आई कैन हियर यू. नहीं, आई कैन हियर यू नाउ. आई कैन हियर यू नाउ. ओके ग्रेट. सर आपने बड़ा अच्छा इसको क्लोजिंग में जो बात की, वो वही हमारा पहला सवाल है जो हर तरफ से आ रहा है, कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस से भी और जनरल पब्लिक से भी. पाकिस्तान हिस्टोरिकली एक बूम और बस्ट सिनेरियो में चल रहा होता है. जैसे आपने अभी फरमाया कि ग्रोथ हमारी आती है, लेकिन जैसे ही वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ में हम जाते हैं, और दैट्स समथिंग व्हिच वी आर अनएबल टू सस्टेन. और आपने सोल्यूशन की भी बात की कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ह्यूमन सेक्टर और ह्यूमन डेवलपमेंट की साइड पे बात होनी चाहिए. लेकिन हम अगर पिछला काफी मतलब डिकेड से देखें तो एवरीबडी नोज द सोल्यूशन, लेकिन वो कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं कर पाया. चाहे हम एग्रीकल्चर यील्ड की बात कर लें, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो हमें क्या चीज ऐसी है जो रोक रही है कि हम सोल्यूशन जानते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उसमें? बहुत सारी चीजें रोक रही हैं. आप मैं ये समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि हम सोल्यूशन जानते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम्स पता है. हर पाकिस्तानी को प्रॉब्लम पता है. मैं आपको बहुत प्रॉब्लम्स गिना देता हूँ. हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो एक अरसे दराज से नुकसान की हालत में चल रहे हैं. PIA जो है वो पता नहीं अरबों का नुकसान सालाना करती है. स्टील मिल अरबों का नुकसान सालाना करती है. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली की अरबों का नुकसान करती है. सब सोचते हैं प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं होती है. कोई ना कोई रुकावट आ जाती है. सिस्टम हमारा ऐसा है कि कोई ना कोई रुकावट आ जाती है. हमें ये पता है कि बिजली के अंदर लाइन लॉसेज हैं 20% जो कि दुनिया से डबल है. हम वो कम नहीं कर सकते. और हम ये भी समझता हूँ, मैं या बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब तक आप इन चीज़ों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे ये सही नहीं होगा. सुई गैस के अंदर मैंने सुना है कि इस वक्त 20% सुई सदन गैस के अंदर UFG है, अनअकाउंटेड फॉर गैस. जब आपके अपने पैसे लगेंगे ना, जब बोर्ड वाले मेंबर्स उधर बैठे होंगे जिनके अपने पैसे लगे होंगे, ये अनअकाउंटेड फॉर गैस एक दिन में अकाउंट हो जाएगी. लेकिन जब तक अदर पीपल्स मनी है वो चीज़ नहीं होती है. आपके पास ये पता है कि आपके वफाक जो है वो बड़ा लंबा डेफिसिट कर रही है, सूबे सरप्लस में कर रहे हैं. आपको मे बी यू हैव टू रीथिंक द NFC. वो नहीं हो रहा है, बात भी नहीं हो रही है. यू नो फॉर इंस्टेंस कि आप 3 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा आप सेल्स टैक्स जमा करते हैं, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स करते हैं, आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं करते. प्रॉपर्टी होल्डर्स के ऊपर सिर्फ 500 अरब रुपए का टैक्स है, कंजम्पशन के ऊपर 3-3.5 अरब रुपए का टैक्स है. हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे. सो पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मैं आपको सच बताऊं, वन रीजन nobody does anything, अगर कल हमारी हुकूमत ने कुछ किया इस पे, इज बिकॉज ऑफ NAB. आई मीन यू नो, एक काबीना के फैसले होते हैं, ECC के फैसले होते हैं. पिछली हुकूमत के ज़माने में, कोविड के ज़माने में आपको $3.5-4 की गैस मिल रही थी, जो आज हम $30 की खरीद रहे हैं. और वो 3-3 साल के एग्रीमेंट करना चाह रहे थे. एक कंपनी ने, ट्रैफिक ब्यूरो ने लेटर आपको लिखा था, आपने नहीं लिया.
اتنے کوئی بھی بیوقوف نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ سستی پرائس ہے. لیکن آپ نے اس لیے نہیں لیا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اگر آپ لیں گے 3.5 میں تو نیب آ کے بولے گا بھائی تم نے 3.25 میں کیوں نہیں لیا. اس وقت آپ $30 میں لے رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پھر اس کو ویپنائز کرا گیا نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا گیا. ہم لوگ جب جیل میں گئے تو روز پوچھتے تھے آپ نے یہ گیس کیوں لی, کووڈ میں تو اس سے سستی ہو گئی ہے. بھائی کووڈ میں سستی ہو گئی, آج اس سے 6 گنا مہنگی ہے. تو آپ کبھی سودا کرتے ہیں, آپ جب اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں تو ایک آدمی یہ سمجھ کے بیچتا ہے کہ مارکیٹ کم ہوگی, ایک آدمی سمجھ کے خریدتا ہے کہ مارکیٹ بڑھے گی. کبھی اسٹاک خریدتے ہو تو کبھی مارکیٹ بڑھتی ہے, کبھی مارکیٹ نیچے ہوتی ہے. اگر نیب آ کے آپ سے یہ پوچھنا شروع کرتا ہے کہ بھائی تم نے کیوں لیا تو کون خریدے گا. مطلب سو ایوری بڈی نوز کہ نیب از این ایشو بٹ نیب اسٹیز دیئر. So there, I mean, so we understand some solutions, we don't know some solutions, we know all the problems, but every country has problems, but Pakistan solve these problems. These problems just linger on and on and on. یہ problem ہے ہمارے پاس. سر تو اب اگر ہم اس میں دیکھیں, آپ نے بات کی کہ نیب از دا ون آف اے کی ایریا جہاں پہ ڈیسیژن لیتے ہوئے اگر ہمیں سولوشن اور پرابلمس کا آئیڈیا بھی ہے, تو آر وی گوئنگ ٹو سی دا چینجز ان دا لا جو ابھی آرڈیننس آ بھی رہا ہے جس کی بات بھی ہو رہی ہے اس وقت, ڈو وی سی دیٹ کہ نیکسٹ ایئر کے لیے اف وی ایزیوم دیٹ کہ دس the government is going to complete the term, so آپ کو definitely کچھ actions بھی لینے ہیں, کچھ implementation کی سائٹ پہ جانا ہے, تو do we see that NAB going away or NAB significantly changing its form or substance? مطلب میرے خیال سے کل اسمبلی نے کچھ قوانین تو پاس کیے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے, لیکن کل اسمبلی نے کچھ قوانین پاس کیے ہیں. آئی ہوپ کہ نیب کا جو قانون ہے وہ چینج ہو اور آرڈیننس کچھ آئے اور کوئی چیز چینج ہو, کیونکہ یہ اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے پاکستان. مطلب حالانکہ دیر آر obviously people within our government who thought کہ نیب کے قوانین چینج نہیں ہونے چاہیے, اور پی ٹی آئی کے منسٹرز کو بھی وہ ذرا جیل کے سیلز دکھائے جائے جدھر ہم کو زبردستی رکھا گیا تھا. لیکن آئی تھنک کہ بیٹر سینس پریویلڈ اینڈ وی سیڈ کہ ہم نے کوئی ریونج کی سیاست نہیں کرنی ہے. لیکن 12 So thank you very much. So NAB is a one constraint. اب اگر ہم different business model دیکھیں جو ہم نے economic models in recent past میں دیکھے ہیں, جس میں ویتنام, ساؤتھ کوریا, چائنا, جنہوں نے پچھلے 25-30 سال کی ایک کنسسٹنس ایفرٹ کے ساتھ they have changed their economies, اور لیکن اس میں بڑے ٹف ڈیسیژن بھی لینے پڑے, کنسسٹنسی بھی تھی, اور اس میں سکسیسو گورنمنٹس بھی ان کانٹریکٹ کو آنر کرتی رہی ہے. Is it something which we can see happening in Pakistan, number one? And number two, how business community and public can support that کہ یہ consistency آنی چاہیے even if there is a change in the government? 2-3 چیزیں ہیں اس میں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہر پرومس جو کہ پچھلی حکومت نے کیا ہے, نہ صرف عمران خان کی حکومت میں, اس سے پچھلی حکومتوں میں کیا, وہ تمام حکومتیں جو اگر پرائم منسٹر کے حیثیت سے انہوں نے پرومس کیا یا کسی فائنانس منسٹر کے حیثیت سے, اس پہ ہم کھڑے ہیں, اس پہ وی آر باؤنڈ, دوز آر ساورن ڈاکیومنٹس, وی ہیو ٹو honor that. ادروائز تو ہمارے کسی بھی ڈاکیومنٹ کا آج کے بعد کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. سو ایوری تھنگ دیٹس بین سائنڈ بائی دا پریویس گورنمنٹ, دس گورنمنٹ اٹ اسٹیز. اینڈ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, عمران خان صاحب اپنے دھرنے میں کیا کرتے تھے نا, کہ میں پچھلی حکومت کی باتیں نہیں مانوں گا, آئی ایم ایف کو پیسے نہیں دوں گا, لیکن سب ان کو بھی he had to obey within the international law, and he had to honor our commitments, and every future government that comes will have to honor the commitments that we make. So اس میں کوئی حکومت پاکستان نے آج تک رنیگ نہیں کیا ہے. ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, ہم ایسی کوئی چیز نہیں کبھی بھی کی ہے, آئندہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. پالیسیز جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے پہلے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ڈے ون بھی کہا تھا, اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم میثاق معیشت پہ, چارٹر آف دی اکانومی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ منیمم ایجنڈا کر لیں. Obviously everybody, all of these people, whether it's Asad Umar, whether it's Shaukat Tareen, whether it's me, whether it's Ishaq Dar, we all have اپنا ذہن ہوتا ہے, مطلب اپنی پارٹیاں ہوتی ہیں. That's why we are in different political parties, right? لیکن آپ ایک بیسک پہ اگری کر لیں کہ اگر فار انسٹنس آپ نے پرائیویٹائزیشن پہ اگری کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, اگر ایگریمنٹ ہے تو پھر ایگریمنٹ کر لو. پھر اس کے بعد آپ بولیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس پہ بیکار سیاست نہیں کریں گے. اگر نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ منیمم چیزوں پہ تو ایگریمنٹ ہو جائے گا, کچھ چیزوں پہ تو ایگریمنٹ ہو جائے گا نا, تو وہ کر لیں. Charter of economy, I think consensus building, ادھر bare minimum اس چیز کو لیا. No, that's very good. And the government کی اگر یہ direction ہے تو I think we really appreciate that کہ اکانومی اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. سر جسٹ ایک پبلک کی سائٹ سے سوال ہے, انہوں نے 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں: انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ, ایکسٹرنل ڈیٹ اور پی کے آر ڈیپریسیشن, اگر ہم امپورٹ لیڈ اکانومی کی بات کریں.
تو دیز آر دا تھنگس جو کہ جنرل پبلک کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اینڈ اس وقت اگر ہم نیکسٹ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں دیکھیں تو ڈو یو ہیو اینی ٹائم فریم جہاں پہ چیزیں تھوڑی سی ایز آؤٹ ہو رہی ہوں نیکسٹ 3 months 6 months 9 months؟ دیکھیے جیسے ہم آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کی طرف موو کریں گے اور آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ جون کے مہینے میں, تو آپ دیکھیں گے کہ فورن کرنسی مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی, اسٹاک مارکیٹ میں بھی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کرنسی اسٹیبل ہو جائے گی تو جو کرنسی ڈپریسیشن کی وجہ سے انفلیشن تھا وہ کم از کم نہیں ہوگا. جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائز میں ہم نے بڑھائی ہے, اس سے انفلیشن آئے گا. لیٹ می بی ویری کلیئر, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس سے انفلیشن آئے گا. ٹھیک ہے, the question is کہ اگر ہم نہیں بڑھاتے اور ہم حکومت ڈیٹ لیتی رہتی تو اس سے بھی کتنا انفلیشن آتا. اگر ہم نہیں بڑھاتے اور کرنسی ڈی ویلیو ہوتی اس سے بھی کتنا انفلیشن آتا. سو یو ہیو ٹو بیلنس دوز تھنگس. ایک افیکٹ نہیں ہوتا اکانومی کے اندر, 2-3 قسم کے افیکٹ ہوتے ہیں, تو یہ اس سے بھی انفلیشن آئے گا. ہمارا جو نمبر 1 ٹارگیٹ ہے, جو شہباز صاحب کا مجھ کو انسٹرکشن ہے, یہ ہے کہ گیٹ اے ہینڈل آن انفلیشن. پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے اگلے سال وہ انفلیشن کے اوپر ہینڈل کرنا ہے اگلے 2-3 مہینوں کے اندر, کہ انفلیشن کو ہم کنٹرول کر لیں گے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ انسیڈیس ٹیکس ہے غریب لوگوں کے اوپر. ایک مرتبہ انفلیشن ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ تو گروتھ بھی کی طرف بھی جائیں گے. لیکن اس وقت میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہماری پرائورٹی جو ہے وہ انفلیشن زیادہ ہے, گروتھ کم ہے. ایکسچینج ریٹ کے اندر ہم ڈائریکٹ مداخلت کوئی نہیں کر رہے, اسٹیٹ بینک اپنی پالیسی کرتا ہے. انٹرسٹ ریٹس بھی اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسی ہے, ہماری ڈائریکٹ مداخلت نہیں ہے. لیکن جب آپ کا نامنل انٹرسٹ انفلیشن جو ہے وہ 13-14% پہ ہو تو آپ کا ریئل انٹرسٹ, آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس سے بہت کم نہیں ہوتا. ویری ٹرو سر. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ فاروق خان نے, ایم ڈی اینڈ سی او آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اور وہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ. فاروق, Farooq is here. So Farooq, if you can ask a question. جی تھینک یو سجید, تھینک یو ڈاکٹر مفتاح. میرا سوال ایکچولی اسی سے لنک تھا جو آپ ابھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ آپ کو بہت کلیئرلی پتہ ہے اسی کے سارے سولوشنز نہیں معلوم جس طرح آپ کہہ رہے تھے, مگر بہت سارے اکنامک چیلنجز اور سولوشنز جو ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. جو چیلنج ہے ہمارا ملک کا از بلڈنگ پولیٹیکل کنسنسس. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک براڈ کولیشن میں اور اتنی ہیٹڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ کس طرح یہ کنسنسس کریٹ کریں گے, اور مور امپورٹنٹلی بزنس اور کارپوریٹ کمیونٹی کس طرح آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے ان ہیلپنگ ٹو بلڈ دیٹ کنسنسس, کیونکہ کرائسس اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے چیزیں کرنے کی جو نارمل ٹائمز میں نہیں کر سکتے, جس طرح ایس او ایز کا آپ نے پرائیویٹائزیشن کا کہا. اور capital markets, I can assure you, will support you in taking whatever tough decisions are needed to be taken. But first of all, I'm proud of Pakistani business community and even other ہمارے جو لوگ ہیں, جرنلسٹ کمیونٹی, سوشل میڈیا کمیونٹی, کہ انہوں نے بڑا انکریج کیا. یہ ہم نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیٹرول کی پرائز اور ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے, اور ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت تو کرٹیسزم آئے گی اوبویسلی, بٹ بزنس کمیونٹی نے بڑی اس کے اندر سپورٹ کری ہے, جرنلسٹ نے بہت سپورٹ کری ہے, اینالسٹ نے بہت سپورٹ کری. سو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ پاکستانیز are really have become economically literate, and they understand that government doesn't have this money to do this, and I'm surprised at how mild the criticism has been and how positive the reaction has been. And just hold our feet to fire. جب ہم صحیح چیز کریں تو ہم کو اپریشیٹ کریں, لیکن جب غلط چیز کریں تو بالکل آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض بھی ہے کہ ہماری تنبیہ کریں کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو آپ اس میں. and you know کہ we are not people who will take offense at criticism. سر تھینک یو ویری مچ. سر ایک اور پبلک کا بڑا اسٹرانگ ریپیٹڈ کوشچن آ رہا ہے کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ اس بجٹ میں ٹیکس ریٹ لوور سائڈ پہ ہو؟ جو میں نے جب پچھلا بھی بجٹ دیا تھا تو میں نے معیشت کے اندر انکم ٹیکس کو ریٹ کم کر دیا تھا, اور میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2 سال 3 سال میں انکم ٹیکس کے ریٹ کم کر دوں تو میرے پاس زیادہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم کنونسڈ آف دیٹ. بہرحال وہ انہوں نے چینج کر دیا. اس بار بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ ریٹ بڑھاؤ. میں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ یہ بالکل نہیں کروں گا. تو یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ کسی بھی پرسنل انکم ٹیکس کا ریٹ نہیں بڑھے گا. میں کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج بھی میں نے ایف بی آر چیئرمین سے وہ بات کی ہے, ہم کوشش کریں گے کم کرنے کی, ریٹ بڑھائیں گے نہیں.
So I think that's a great news for most of the people who are worried, क्योंकि आप अभी भी इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं. बट आई थिंक आपका इसी एक्ट जो लास्ट टाइम आपने जी सर प्लीज इफ यू इस वांट. पे मैं मुझे जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 3:30 बजे प्राइम साहब की मीटिंग थी, जी मैं जी देर होगी. मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं कि हम कोई फॉरेन ट्रैवल बैन कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. हमने सैनिटरी वेयर, टाइल्स, थिंग्स लाइक दैट बैन करा है. हमने सैनिटरी नैपकिन्स या डायपर्स या ऐसी कोई चीज़ बैन नहीं करी है. कोई भी रॉ मटेरियल नहीं बैन किया. अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती से किसी HS कोड में ऐसा आ गया है तो हमें बता दीजिए, हम वो फौरन हटा देंगे. सिर्फ इसेंशियल, नॉन इसेंशियल लग्जरी फिनिश गुड्स को बैन किया है कुछ अरसे के लिए. और ये जो बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ फाइन. वी आर नॉट गोइंग टू बैन एनी ऑफ दोज थिंग्स. Sir, thank you very much. Sir, thank you very much. And thank you for joining us. And on behalf of Corporate Pakistan and the Nutshell Conference, and definitely all our participants and audience, we would like to thank your presence here and discussion. So, Miftah साहब की discussion में दो तीन चीजें बड़ी अच्छी highlight हुई. एक तो government want to have a charter of economy with the bare minimum जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर सके और एक पॉलिसी फॉर्मेशन की साइड पे और कंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन की साइड पे जा सके. नंबर 2, उन्होंने ये एक जो डाउट्स थे बहुत ज्यादा कि IMF के प्रेशर की वजह से शायद बजट में टैक्स रेट बढ़ रहे होंगे, ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इस तरह की चीज हम यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे. एंड नंबर 3, फ्रॉम अ इंपोर्ट परस्पेक्टिव एंड जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो ही इज वेरी विलिंग कि अगर कोई ऐसी चीज आती है जो इसेंशियल इंपोर्ट में शामिल है तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें और वो उस चीज को वहां से रिमूव करने की कोशिश करेंगे. सो ये थे मिफ्ता साहब. अब हम अपने नेक्स्ट पैनल डिस्कशन की साइड पे मूव करते हैं और हमारे पास पैनल में आज जो अवेलेबल हैं वो हैं रियाज खान, जो पहले पैनल में हमारे साथ होंगे. रियाज खान इज प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इनका एक और बहुत बड़ा तारुफ है, इज लीडिंग एंग्रो राइट नाउ. लेकिन आज जो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ OICCI ज्वाइन कर रहे हैं. और इसी पैनल में हमारे साथ एक डिस्कशन के लिए अवेलेबल होंगे मोहम्मद औरंगजेब, हु इज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एंड आल्सो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन. सो यहाँ पे हम आज इनसे डिस्कस करेंगे कि OICCI का पर्सपेक्टिव क्या है अराउंड द कॉन्फिडेंस, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमी, और वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारे साथ. और शुरू करेंगे हम रियाज साहब के साथ और फिर फॉलो करेंगे हम औरंगजेब साहब को, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे. कुछ 10 मिनट का एक ओवरऑल ओवरव्यू देंगे रियाज साहब, और उसके बाद 10 मिनट्स का एक ओवरव्यू देंगे औरंगजेब साहब, और देन वी विल गेट इनटू द क्वेश्चन आंसर सेशन. सो वेलकम टू टुडेज सेशन रियाज साहब एंड औरंगजेब साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड सलाम टू एवरीवन. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप for holding this particular event, and I want to thank you, Sajid, for your introduction. And as we've spoken about, as Finance Minister has spoken about it in quite a bit of detail, that the boom bust cycles that Pakistan goes through every few years is not something which is uncommon. But I think it's also important to realize at this stage that the particular crisis we are facing right now is fundamentally different and far more serious. We're currently living in a world which is recovering from the pandemic and is going through a massive inflationary cycle. And this inflation has essentially been induced by the fiscal stimuli that has been given by various governments to kickstart their economies during the pandemic. The supply chain challenges that have been faced once the aggregate demand picked up, and then most recently the Ukraine and Russia war, when we talk of the commodity price increases that have happened mostly on the energy and food side. Now that is the global theater in which our local economic and political crisis is being played out. And just to kickstart the discussion, while the challenges were very well articulated by our finance minister, I want to just touch upon some of the major shifts that are happening globally and what kind of risks do they pose to the economy of Pakistan, and then of course what are some of the opportunities that come out of it. The number one shift, of course, is the growing focus towards food security.
Now, if you look at some of the studies that have been carried out by the UN, the food demand is going to double by 2050. There were approximately 800 million people who were undernourished in 2020, and this number is likely to grow. And if you take into account the Russian-Ukrainian war, and if I was to pick on wheat, Russia and Ukraine together supply approximately 20% of the world's wheat. If you now look at the local Pakistani dynamic, our population is due to increase or double rather by 2050. And the biggest risk, or the two risks that we face, number one is food insecurity. As the finance minister pointed out, that since 2020, Pakistan has been a net importer of wheat. We started with 3.7 million tons of wheat import in 2017, and this year, as he mentioned, it's going to be around 3 million odd tons. And if we're not able to increase our yields, then certainly this wheat will need to be imported, and that will further exacerbate our balance of payment situation. So the opportunity in all of this is very clear. For a country like Pakistan, where our yields are 30 to 40% worse than some of the other leading countries, there is a huge room for improvement. And if we're able to bring about these improvements, then not only are we going to not require to import wheat and food products going forward, but this could potentially become a source of export for us. And I want to give credit to a lot of organizations here. And since Aurangzeb Saab is here, I do want to mention that Habib Bank is also playing a big role, because financial inclusion of the farming community is perhaps the major bottleneck in helping Pakistan unlock the potential of our agriculture sector. The second shift, which is happening globally, is on the energy side. And as you know, that Russia is one of the largest exporters of gas, and we've seen how the oil prices and the gas prices have reacted to after the war. Looking at the local dynamic, as far as our own gas usage is concerned, 70% of it is the portion of gas which is provided by our local resources, and 30% is imported. By 2030, this ratio will flip, which means that 70% gas will need to be imported, and 30% will come from local resources, because obviously our gas reserves are also depleting. And we know that energy is probably the largest component as far as our imports are concerned. So the risk is very clear. And I think it has played out in front of our eyes over the last 3 months, where oil prices and gas prices have gone up. We've been taking a hit of about 120 billion rupees on a monthly basis. And of course, everyone is hesitating to pass this down. And that's because in terms of energy, we are just heavily reliant on imports. So what's the opportunity in all of this? And the opportunity is very clear and in front of us. We need to maximize our indigenous resources. And here, Thar is one example which I would like to give. And just on very, very recent numbers, if we were to look at the cost of power which is being produced, currently a per kilowatt cost of electricity produced through LNG costs around 27 rupees. If it's imported coal on current prices, that's well over 35 rupees. And on indigenous coal, it's around 13.4 rupees. And this is the price which the Thar coal will reach once phase 3 of Thar coal comes into play, which will be in the next year or so. What this shows you is that we do have the resources which can help us mitigate some of the risks that we are facing currently because of energy imports and all the vulnerability that has been caused because of the war. The third shift that I want to talk about is the accelerating shift in technology. Globally, we've seen that whether it's AI, 3D printing, blockchain, metaverse, IoT, the success of technology companies themselves on how they're valued and how the top 5 companies now include mostly technology companies just shows us of the major shift that is happening towards technology.
In terms of local dynamics, now we have over 120 million people who've got access to mobile phones. We've seen how the tech startup, how encouraging the numbers have been, where $350 million of investment have flowed into this area. We've seen how SARS program has been able to work. So instead of really talking about any risks over here, I think there are only opportunities for us, because usage of data is only going to grow over the next 10 years. And it really comes down to how we can help educate people, how we can help educate farmers, and can we use technology as a medium to take care of some of the challenges that we've not been able to take care of earlier. The fourth shift that, of course, is happening is towards ESG. And as we know that there are so many countries, 130 plus countries who represent about 80% of the world economies, have actually signed up for net zero by 2050. Our own government has committed to a 60% contribution from renewable energy as far as power is concerned, and 30% presence of 30% of electronic vehicles. The risk, of course, in this shift for us is that if we are to play a bigger role in the global marketplace, if we are to increase our exports, then we must realize that our customers, particularly in developed countries, have now become more mindful of ESG standards. Not only is it our moral responsibility, but now this has become an economic imperative. The opportunities, of course, for companies like ours, and happy to see that a lot of the textile exporters have made these pledges that the new opportunities will come up, and if our manufacturers are adhere to these conditions, then market access for them in developed countries will become possible. We know what challenges we are facing. I think there's no point repeating the challenges, because whether it's on the export side, whether it's on the tax collection side, whether it's as the finance minister said, on the productivity side, whether it's our inefficient SOEs or our inefficient fuel mix, inefficiencies in our overall value chain, I think as a country we need to figure out how we can match some of the global shifts that are taking place. What are some of the opportunities that are being created, and then look to address some of the challenges that we have. And I just want to mention a few that, of course, are very possible and in front of us. Number one, of course, is the advantage of technology. Presence of NADRA, success of the SARS program, and several other initiatives clearly show us that we can document the economy. Not only is it going to help us increase our tax to GDP, which currently stands at around 11%, and that just won't cut it. India is going close to 21%, and we are still below 11. Not only is it going to help us in bringing people into the tax net, but something that the finance minister spoke about, direct subsidies. Rather than providing fuel subsidies to people like us, technology is going to make it possible for the government to provide these subsidies to people who really deserve it. And then, of course, financial inclusion. So the number one challenge that probably stands between us and higher agriculture productivity is the ease and the access of the right kind of financing to farmers. And with the development of technology, with so many fintechs coming in, with digital banking, and the fact that people now have access to broadband on their phones, will make it possible for them to get trained, and then for them to get access to markets which they previously didn't have. We have to look at ESG as an opportunity, whether it's for the textile sector, for chemical sector, for recycled plastics. There are several other opportunities that are present. We need to, of course, encourage investment in productive sectors and not in real estate. And I think that's a point, again, that was mentioned by the finance minister, that there has to be a push from our side to make investors invest more in manufacturing, in agriculture, in real businesses, as opposed to real estate. And last but not the least, please. Yeah. Last but not the least, it's on upskilling of our labor force. Yes. With such a large portion of our country being young,
and the fact that there is tremendous opportunity in the technology sector and technology exports. Upskilling of the labor force is of great importance. So thank you very much, Sajid, for the opportunity, and to the Corporate Pakistan Group. Thank you, Yasef. But stay with us. We have got some questions very specifically for the conversation you picked up. There are people who are recognizing the opportunities and risk, and वो चाह रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा expand करें इस conversation को, और हमारे पास अभी question answer session में थोड़ी सी opportunity आएगी. So now I would like to invite, and I'm honored to invite Aurangzeb Saab, who is chairman of PBC and PBA, and he's also leading HPL. Like Vyas mentioned, agriculture के हवाले से भी औरंगजेब साहब हम आपसे थोड़ी देर में हम आपसे उस पे प्रोडक्टिविटी और HPL का जो इनिशिएटिव है उस पर थोड़ी सी एक्सपेंशन चाहेंगे गुफ्तगू के हवाले से. Over to you, औरंगजेब साहब. Ji, thank you, Sajid, and again, greatly appreciate the invite from Nutshell and Corporate Pakistan Group. I think Vyas has done a fantastic job in setting up the sort of the global imperatives around agri, energy, tech, ESG. लेकिन coming to Pakistan, देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा और अभी व्यास ने भी जिक्र किया, there is no dearth of policy prescriptions in the country. It's all about timely decisions and timely execution. हम जो अपने अपने छोटे छोटे कॉर्पोरेट ग्रुप चलाते हैं या कंपनी चलाते हैं, वो हमें मालूम है कि ये जो timeliness of the whole thing, how critical that is. Because अगर आप देखें from various administrations, Economic Advisory Council after Economic Advisory Council, in terms of the what and the why, we are all very clear in terms of roadmap for inclusive and sustainable growth. हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से हम बात करते आए हैं about arresting the premature industrialization that has happened in this country, and therefore जो हमारा mantra है in terms of make in Pakistan and sort of the focus on exports. लेकिन मैं सिर्फ दो तीन चीजों पे फोकस करना चाहता हूं because there's a whole laundry list, right, of short term, medium term, long term things that we need to do in the country. लेकिन you know the highest value imperatives जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, व्यास ने जिक्र किया around the tech stack, if you want to call it that, और इंडिया का भी जिक्र किया. देखिए इंडिया is going to grow at 8% this year, और अगर हम देखें कि जो 4 पिलर्स हैं जिसकी वजह से इनकी ये ग्रोथ जा रही है, और ये the country, India is moving towards a $5 trillion economy by 2027. Out of those 4 pillars, 2 are dependent on their preeminence in IT, और जो अभी बिस्प की और एहसास की बात की गई कि जो डिजिटल वेलफेयर सिस्टम है वहाँ का, तो जो उनकी IT इंडस्ट्री है, we all know about it, $230 billion in terms of annual revenues, which means कि उनकी जो export of services है, just based on IT, they are 5th in the world, whereas on the goods side, they are 16th in the world, which means जब हम पाकिस्तान में diversification of export की बात करते हैं, we have to go beyond textiles. And there are things, I'm just coming back from a freelancer conference, we have all the bells and whistles जो अभी व्यास ने भी जिक्र किया है उसका, कि जो हमारी डिजिटल इनेबलमेंट है, जो वहाँ आधार कार्ड था, यहाँ जो नादरा की जो सारी सिचुएशन है, जो बिस्प का जो सारी पाइप्स बिछ चुकी हुई हैं, so we have all the building blocks in place कि हम इस जर्नी को एक्सेलरेट कर सके. The second thing I do want to mention is CPEC. कि देखिए phase 1 was all about infrastructure, phase 2 is operationalizing and making sure we get actually the best out of it through industrialization, through export processing zones, ताकि हम उस infrastructure को monetize कर सकें. That is again an opportunity जिस पे हम a lot of time, effort and money has been spent, and we should now be trying to monetize that through the export processing zones. एक और मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जो हमारी digitalization of the economy है, again it's back to tech, but I'll just leave you with a data point कि पिछले साल में, और ये स्टेट बैंक की फिगर है, कि the cash in circulation in our economy has gone up by 1.1 trillion, and the total deposit in the banking system has gone up by 250 billion.
So इस वक्त जो CIC over the money supply है is at an all-time high of 31%. आप इंडिया से कंपेयर करें तो that's 13%. हम अगर उस 31% को 25% पे भी ले आए, so the amount of cash that can be pumped into the economy into more productive uses, and I think to a certain extent Gyas also mentioned that, and Dr. Mifta also referred to that, कि real estate से निकल कर we move towards more productive use of the cash. And there are a number of things that we can focus on, including the focus on SME. But in the interest of time, मैं दो और बड़ी I just want to mention two very quick things. एक तो reiterating this charter of economy, right, with cross-party consensus, that is absolutely essential, because ultimately जब हम business confidence की बात करते हैं तो इस policy consistency and continuity, generally जो businesses हैं वो जो VUCA का एक concept है कि things are going to be volatile, things are going to be uncertain, complex and ambiguous environment. हम मुल्क के खुदादाद हैं, हम सब लोग actually we adjust the political volatility very quickly. लेकिन ये जो policy consistency and continuity है, that will only come through charter of economy, and that's very critical. And the last thing I just want to mention is कि देखिए short term, medium term, long term चीजें तो हम कर रहे हैं. The immediate imperative was जो हमने कल भी देखा है is restoring the fiscal prudence. So उसमें जो अभी subsidies की बात आई है, I think that's a very welcome step which has been taken, and we move towards the revival of the IMF program, because that is going to be absolutely critical from a balance of payment perspective. ये चीज करनी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर the rest will not follow. Thank you. Thank you, Aurangzeb साहब. I think मैं आपके लास्ट पॉइंट से I'll pick it up that जो अभी आपने बात की कि IMF की एक सपोर्ट हमें चाहिए, आज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और nobody can deny that given the current situation. लेकिन ultimately I think मिफ्ता साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि हमारी जो ओवरऑल बिजनेसेस हैं, unless until they start producing stuff for export, और हम अपनी एक्सपोर्ट को एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं लेके जाते, 60 बिलियन 100 बिलियन डॉलर तक नहीं लेके जाते, सो ये आईएमएफ की जो रीपेमेंट्स हैं ये भी सस्टेनेबल नहीं रहती. सो आप दोनों इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेसेस की साइड पे. सो क्या वजह है कि हम अपनी इंडस्ट्री साइड पे अगर हम देखें तो हमें वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ नजर नहीं आती ओवरऑल. अगर हम इस वक्त सिर्फ आईटी को नहीं बात कर रहे, आईटी पे मैं वापस आता हूं, हम वी विल टॉक अबाउट दैट आईटी एंड लेकिन अगर हम प्रोडक्ट और गुड्स की बात करें तो हमें वो एक्सपोर्ट नजर नहीं आ रही, और एक्सपोर्ट में उस तरह के ट्रेंड्स नजर नहीं आ रहे जहां पे पाकिस्तान सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर रहा हो. सो स्टार्टिंग विद यू औरंगजेब साहब, व्हाट्स स्टॉपिंग अस टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्टेबल हो और नई एक्सपोर्ट मार्केट्स बना रहे हो या मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो, क्या चीज हमें रोक रही है इस वक्त इसमें? देखिए, I'll just take a quick stab at it and then of course Yas can come in. देखिए, पहली बात तो ये चीज है कि it starts with acknowledgement, and we have to acknowledge that the overall productivity of the industry needs to improve to match the regional peers, right? And इसमें दोनों concerted effort चाहिए होगी, both by business and the government, और इसमें education है, technical training है. दूसरी चीज इसमें obviously regionally competitive energy है. जो अगर हम आईटी को भी छोड़ दें तो देखिए जो हमारा सारा फोकस है ऑन टेक्सटाइल्स, एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक बिकॉज इस साल इंशाल्लाह हम $30 बिलियन टच कर जाएंगे इन द एक्सपोर्ट बेस. लेकिन लुक एट ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी कैन डू, फार्मा, हॉर्टिकल्चर, मीट, फिशरीज, फर्नीचर, केबल्स, लाइट इंजीनियरिंग. आई थिंक ये तीसरी चीज मैं कहूँगा कि ये हमें बहुत इसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है. And the last thing I just want to mention is just negotiate better market access for Pakistan. देखिए, आपने अभी वियतनाम की एग्जांपल दी है, तो अगर सिर्फ वियतनाम को मैं देखूं तो जो उनकी दे आर मेंबर ऑफ आसियान ऑब्वियसली, लेकिन उनकी ट्रेड एग्रीमेंट्स किन के साथ हैं? चाइना, कोरिया, ताइवान, यूएस, ईसी, यूके, रशिया. And we just need to do a much better deal in negotiating that access. Even अगर मैं वियतनाम का, चाइना को हम कहते हैं कि is the one of the most important partners, but even in terms of जो बांग्लादेश का उनका access है through the FTA is much better than in Pakistan.
So I would say کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں which I do think we need to focus on to get this 30 billion to 40 and 50 billion, even if we leave the IT part aside. No, thank you, Aurangzeb. Yes, sir. So آپ کا what's stopping us from, like انہوں نے اورنگزیب صاحب نے ایک لسٹ آف ڈفرنٹ انڈسٹریز کی بات کی جہاں پہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے, بٹ وی آر ناٹ سینگ دیٹ ایکسپورٹ. ہماری ریلائنس ٹیکسٹائل پہ بہت زیادہ ہے اور ٹیکسٹائل پہ کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے ورلڈ وائڈ. ابھی بھی ہمارا مارکیٹ شیئر از نیکسٹ ٹو نتھنگ, اٹس ویری نیگلیجیبل ان دا اوور آل ایکسپورٹ آف ٹیکسٹائل. سو باقی ایریاز میں ہم کیوں ایکسپورٹ نہیں کر پاتے؟ اٹس اے ویژن, اٹس اے مارکیٹ ایکسیس, اٹس اے لیبر پروڈکٹیوٹی. آپ کے خیال میں کیا چیز روک رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں سجید صاحب, ایک تو ٹیکسٹائل کی سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیکسٹائل کا دنیا بھر میں جو مارکیٹ ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑھ نہیں رہی ہے کیونکہ بہت سارے امپیریٹیوز ہیں, ایون سسٹینیبلٹی امپیریٹیوز ہیں جس کی وجہ سے علم, اور ہمیں بیونڈ ٹیکسٹائل دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز دیکھنے چاہیے نا. ایز اے کنٹری واٹ آر آور کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز؟ پہلا ہمارا ہے abundant cheap labor. دوسرا, we have a very strong agri base. تیسرا, we've got natural resource availability, minerals. We've got availability of, we've got very high potential for solar and wind power. Then of course it's our geostrategic location. So اگر اس پہ بات کی جائے تو جو کچھ سیکٹرز پاکستان کو فوراً فوکس کرنے چاہیے فرام اے لانگ ٹرم پرسپیکٹو, ان میں سب سے پہلے ہے ٹیکنالوجی سروسز. اور ہم نے اچھی کمپنیوں کا ایگزامپل دیکھا ہے. سسٹمز کا آپ ایگزامپل دیکھیں, 100 بلین روپے کا ماشاءاللہ ان کا مارکیٹ کیپ ہو گیا ہے. اگر ہم لوگوں کو ٹرین کریں اور اس طرف جائیں تو جو آپ کے ملک کی اس وقت ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, آپ کا ورک فورس اس وقت بہت کمپیریٹیو ہے. دوسرا ایریا جہاں ہمیں فوکس کرنا چاہیے جو کہ شاید equally important than technology services is agri exports. آپ نے, پاکستان is blessed with these resources. اگر ہم ایگری میں جا کے صحیح کراپ سلیکشن فارمرز کے ساتھ مل کے کریں, ان کو فائنینسنگ صحیح ریٹس پہ دیں, ان کی فارمنگ ٹیکنیکس کو بہتر کریں, میکنائزیشن لائیں, فارم ٹو مارکیٹ لاجسٹکس ٹھیک کریں, تو بہت پاکستان کا ایگری ایکسپورٹس میں پوٹینشیل ہے. اور تیسرا از منرل مائننگ. ہمارے پاس گولڈ کے, کاپر کے اور بتیرے میٹلز کے ریسورسز اویلیبل ہیں, ہمیں یہ کرنے چاہیے. چاہیے کیا چیز؟ ایک بات جو اورنگزیب نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, مارکیٹ ایکسس. اگر ہم دنیا بھر میں جا کے کمٹ کرتے ہیں کہ ہم رینیوبل انرجی پہ جائیں گے 60% 2030 تک, تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ مارکیٹ ایکسس نیگوشیٹ کریں. ہمیں صرف پیسے مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم مارکیٹ ایکسس کو ملکوں سے مارکیٹ ایکسس دیں اور پھر ان کے ساتھ بزنس کریں. ایک تو یہ بہت ضروری چیز. دوسری جو چیز ضروری ہے جس کی وجہ سے چیزیں اکثر رک جاتی ہیں سجید, وہ ہے لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی میکنگ. جب تک آپ کے پاس کنسسٹنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہوگی, چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹر ہو چاہے فورن انویسٹر ہو, وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہوئے کترائے گا. تو اور پھر جب بات آتی ہے تیسری, which is the targeted subsidy. جس طرح ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کو سبسیڈائز کرتے آ رہے ہیں, ہمیں کچھ ان نئے سیکٹرز کو شروع میں میڈیم ٹرم میں مدد کرنی ہوگی, ان کو کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی ہوں گی. تو یہ چیزیں اگر ہم کریں تو پاکستان کا ماشاءاللہ سے بہت پوٹینشیل ہے ان ایریاز میں, اور ہمیں ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو گیاس صاحب. آئی تھنک آئی جسٹ بلڈ اپون دیٹ. آپ دونوں نے ایک چیز پک کی تھی, بلکہ دو چیزیں پک ہوئی ہیں, اینڈ میں تھوڑا سا اس کا ریفرنس پوائنٹ بھی دے دوں. اگر ہم ویتنام, ساؤتھ کوریا اور اگر ہم ایون چائنا کو ہم دیکھیں تو انہوں نے دو چیزیں جو ہے فنڈامنٹل پرنسپلی ان تمام کنٹریز نے لے کے چلے تھے, ایون تائیوان فار دیٹ میٹر, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اینڈ لیبر پروڈکٹیوٹی. Unfortunately, we do have cheap labor, like اگر ہم اس کو پرائس آربیٹراج کی بات کریں, لیکن جب ہم اس کو پروڈکٹیوٹی معیار پہ اینالائز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے سرٹن چیلنجز آتے ہیں کہ وہاں پہ کوالٹی سے لے کے اور آؤٹ پٹ کی پروڈکٹیوٹی میں we are not competitive compared to China, India, Bangladesh اور سری لنکا for that matter in most of the area. کچھ ایریاز میں پاکستان نے بہت اچھی پروگرس کی ہے ریسنٹلی, اینڈ دوز آر دی اپرچونٹی ایریا, جیسے آئی ٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اسٹل وہاں پہ بھی ہمارے پاس جس طرح ابھی آپ نے بات کی, وی نیڈ ٹو اسپینڈ مور آن دا ٹریننگ اینڈ دا ڈیولپمنٹ سائڈ آف اٹ. تو اگر ہم یہ آئی ٹی کی سائڈ پہ آتے ہیں, اینڈ دا بزنسز فیل کہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹریننگ کی اپرچونٹی ہے, اس میں بچوں کو ہم نے انٹرنشپس دینی ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹس کے رول سے زیادہ
बड़े बिजनेसेस की एक विजन चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी साइड पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और उसके लिए वो उस तरह का रिसोर्स बिल्ड करें और उस रिसोर्स की बेस पे ब्रांड बिल्ड करें। सो आप दोनों एक फंडामेंटली पाकिस्तान के सबसे ह्यूज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ पीबीसी, एज अ पीबीए, एज अ ओआईसीसीआई. Do you think these organizations are divesting or creating a new investment opportunity for themselves in technology side? क्या हमें नई आईटी कंपनीज बनती नजर आ रही हैं जो इनको ट्रेन भी करें और इनको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की साइड पे लेके जाए? आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, इंडिया भी जो है वो 230 बिलियन कर रहा है, फिलीपीन सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर में 30 बिलियन क्रॉस कर गया हुआ है इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में. डू यू सी दीज बिग ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिंग इन दैट स्पेस नाउ? देखिए, I'll take a quick stab at it and then turn it over to Vyas. कि पहली बात तो ये है कि जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि in the last 12 to 18 months we have seen a lot of VC investment coming into the startup in Pakistan. As HPL ourselves, we have set up a VC fund, और हमने पहली जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो फिंजा में की है, और वो फिंजा में इसलिए की है बिकॉज दे एक्चुअली गो एंड डू फाइनेंसिंग फॉर द करियाना स्टोर्स, जिसमें अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं आई थी. तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं इन वन फॉर्म शेप और द अदर लार्जर कंपनीज आर गोइंग इन एंड sort of investing in some of these startups and providing that enabling environment for the startups as well. लेकिन दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, ये जो आपने अभी यूथ की बल्ज की बात की है पाकिस्तान में, which is a real opportunity, कि 60% of our 221 million population is in that youth category. Rather than leaving it to the policy makers कि कितनी नौकरियां आ रही हैं, कितनी नौकरियां जा रही हैं, ये जो फ्रीलांसर जो इस वक्त जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूथ एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए हम क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अगर हम देखें पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन, वो कहते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख फ्रीलांसर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 2 मिलियन प्लस फ्रीलांसर्स आर लर्किंग अराउंड इन पाकिस्तान. अब उनको हर जो पाकिस्तानी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, उनको इनेबल करें. जो बैंकिंग सेक्टर है उनके लिए फास्टर, चीपर, मोर एफिशिएंट सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें. इवन इफ दे आर मेकिंग $100 per month or $200 per month, this is all going to add up. So I think this is a big upside which is there for Pakistan. I have a few other thoughts, but in the interest of time, I just wanted to leave it for some time for Gyas as well. Yes. No problem. देखिए, Sajid, there are lots of initiatives being taken, as Aurangzeb also mentioned. But the answer to your question, that are the big investors, the big groups, are they doing enough or investing enough in technology as businesses? The answer, sadly, is no. And I think that there is a lot of room for growth. And I think that will only happen only when they're going to see success of companies, but also when you're going to remove other rent-seeking opportunities from the economy. When there are going to be so many opportunities for investors and businesses to invest in and make outsized returns without putting as much at risk, then you're not going to see money flow into riskier investments like technology, even though they may have a big potential. So we have to create the right market conditions. We can't force people to invest in areas. Investors are very smart, they're very savvy. They will come and invest in technology when you build the right conditionalities around it and you remove opportunities of seeking rent, as we have over many decades in our country. Now, thank you. Yasab, I think that's a very relevant point. Investment seek returns, and that's this fundamental principle. जहाँ पे return ज़्यादा मिलेगा, अगर वो आज rent seeking attitude में, real estate में, currency, quick trading में मिल रहा है, तो the people will start mobilizing that one. Just charter of economy की जो अभी बात की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और आप लोगों ने भी,
आई थिंक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आज अगर हम बात करेंगे और जहां पे हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस की बात करते हैं एज अ बेयर मिनिमम, where the business has to also step up and become a part of that charter of economy, because बहुत सी कमिटमेंट बिजनेसेस की साइड से भी आनी है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करेंगे एक्सपोर्ट के लिए, वो टेक्नोलॉजी साइड पे इन्वेस्ट करेंगे, उसमें फिर गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट लेनी है, देन यू कैन गो देयर एज वेल. सो आई थिंक इट्स नॉट अ वन साइडेड थिंग जिसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात करें. बिजनेसेस की साइड से वो कमिटमेंट और इन्वेस्टमेंट और वो लिटिल बिट रिस्क एपिटाइट एंड कॉन्फिडेंस जरूरी है कि उनका भी जिन एरियाज में बिलीव है वहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए. I think just in interest of time, I'll just try to summarize it. Anything you want to add, Riaz Saab or Aurangzeb Saab, in a minute? मैं सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ सजीद, as a reaction to जो अभी रियाज ने बात की है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि we're all driven by return on investment and return on equity. But I do genuinely believe that the responsible organizations in Pakistan, they do need to invest in capacity building. Yes. और हमें बढ़कर, and we will have to step up in interventions, whether those are interventions on the agriculture side, whether those are interventions on the infrastructure side, whether interventions on the IT side, which means we'll have to put our neck on the line, which means we'll have to get out of our comfort zones. और यही आपके उस सवाल का जवाब भी है कि जब हम गवर्नमेंट से इतनी चीजें मांग रहे हैं, so then we also need to step up, need to commit, right? As big organizations, small organizations, SMEs. That's the only last thing I just want to mention. Thank you. Any final comment from your side, Riaz? Otherwise, I'll summarize it. No, I think go ahead, Sajid. I think Aurangzeb has covered it well, so please go ahead. Thank you. I think just going back to fundamental, अभी हम फाइनेंस मिनिस्टर की जो गुफ्तगू थी और रियाज साहब और औरंगजेब साहब ने भी उसको फर्दर एलैबोरेट किया. सो वी हैव टू गो बैक टू द फंडामेंटल. जिस तरह रियाज साहब ने भी शिफ्ट्स की बात की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, labor productivity, which has to come through the capacity building, the large organizations. The charter of economy is not only for political parties. The businesses have to step up and they have to put the skin in the game, और उनकी साइड से भी वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आनी चाहिए जिनको आज हम अपॉर्चुनिटीज गिन रहे हैं. और उसमें रेंट सीकिंग जो एटीट्यूड है उसको डिस्करेज भी करना है और वो अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज के थ्रू रिमूव भी करने की बात हो रही है. Technology is the biggest benefit which we can see there. ESG is the next big opportunity for us, जिसमें हमें एक successive और progressive way से नहीं चलना. हम we can have we can step up our game just by complying with the ESG के जो standards हैं या sustainability और climate action की जो commitments हैं, और उन्हीं को use करते हुए, सिर्फ इस commitment को use करते हुए कि हम एक ESG compliant society और businesses develop कर रहे हैं, हम मार्केट एक्सेस के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट भी कर सकते हैं. और टेक्नोलॉजी विल आल्सो हेल्प अस टू इंप्लीमेंट दैट ESG, एंड टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प अस टू इंप्लीमेंट दीज ESG रिलेटेड इनिशिएटिव आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल. सो अगर हम यहाँ पे वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो दैट्स नॉट ओनली फॉर आवर ओन बिजनेसेस, हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की एक नई अपॉर्चुनिटी भी वहां पे क्रिएट होती है. सो औरंगजेब साहब एंड रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. I think I have thoroughly enjoyed, और मेरा ख्याल है ऑडियंस की साइड से भी जिस तरह के कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं वो बहुत इस कैंडिड कन्वर्सेशन को उन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. सो थैंक यू फॉर योर कैंडिड कन्वर्सेशन हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू. सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पैनल की तरफ. नेक्स्ट पैनल में हमारे पास जो इस वक्त लीडरशिप अवेलेबल है वो है कैपिटल मार्केट की साइड से. हमारे साथ हैं महीन रहमान, हु इज अ CEO ऑफ इंफ्राजामिन. हमारे साथ फरोख खान हैं जो MD और CEO हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और हमारे पास डॉक्टर अमजद वहीद हैं हु इज अ CEO ऑफ NBP फंड्स हियर. सो थैंक यू वेरी मच Maheen, Farokh and Amjad साहब to join us today. I'm sure you are listening to the conversation which was happening earlier as well, और उसमें हमें काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिले, काफी कैंडिड कन्वर्सेशन चल रही थी, और मिफ्ता साहब एज यूजुअल ही वाज आल्सो वेरी वेरी कैंडिड. सो हम यहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे. सबसे पहले आई वुड लाइक आई विल स्टार्ट विद यू फारूक एंड देन आई विल कम टू Maheen एंड देन डॉक्टर अमजद साहब. फारूक, कैपिटल मार्केट, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, व्हाट्स हैपनिंग देयर, क्या हो रहा है इस वक्त? आप म्यूट पे हैं इस वक्त. फारूक आप म्यूट पे. सॉरी जी, थैंक यू सजीद, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है सो फार. मैं ज़रा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लूँगा क्योंकि जो इस वक्त हो रहा है, आई थिंक दैट इज़
क्वाइट वेल नोन, और किस तरह वो इकोनॉमी और मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को बट मनी मार्केट्स को, एफएक्स मार्केट को भी। तो बट जिस तरह मैं भी मेंशन कर रहा था टू दी एफएम आल्सो कि पाकिस्तान के चैलेंजेस और इश्यूज जो हैं वो मेरी नज़र में प्राइमरीली सोशियो पॉलिटिकल है एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक। सो देयर इज़ नो टेक्निकल सोल्यूशन टू आवर इकोनॉमिक चैलेंजेस। हमें जो एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हाउ डू वी रिजॉल्व द पॉलिटिकल चैलेंजेस फर्स्ट। जिस तरह अभी रिसेंट डिबेट जो ऑयल प्राइसेस पे हुई थी, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। Everyone knew what needs to be done, but politics meant that unfortunately both governments did not take the right decision in time, and that blew a huge hole in public finances, affected the markets, affected the FX, rupee rate and everything. और यही issue है which I believe for the last so many years has also impacted the development of the capital markets in Pakistan. कोई भी एक modern economy दुनिया में function नहीं कर सकती properly without thriving deep, large, liquid capital markets. आपका savings rate, investment rates, proper resource allocation सब कुछ impact होती है। और पाकिस्तान में अब capital markets are probably the most documented sector of the economy, and this should be a great advantage to the country and to us. सारी governments की stated policy है कि हम लोग इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, हम लोग टैक्स बेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड दिस विल बी वेरी वेल सर्व्ड बाय सपोर्टिंग एंड ग्रोइंग द कैपिटल मार्केट्स। मगर अनफॉर्चुनेटली जो एफएम ने भी टच अपॉन किया और गयास और औरंगजेब भी मेंशन कर रहे थे कि पॉलिटिक्स एंड सक्सेसफुल लॉबिंग बाय डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, इससे रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट निकला है। So capital markets, having become fully documented, are now at a significant disadvantage compared to other asset classes. Tax treatment may be, or KYC wala regulations may be. And this is hugely detrimental to efficient resource allocations. क्योंकि जिस तरह capital markets grow करेंगी, economy will get documented and tax revenue will increase. So I hope, as the FM highlighted, that this will change and we'll have more focus and support for productive and documented sectors of the economy. Because at capital markets, we don't ask for any subsidies. We only need a level playing field, and we will make the country proud, inshallah. Within PSX, we have continued the internal reform process, even though इस वक्त वो macro issues से highlight से overwhelm हो रहा है। हमने significant progress की है to make it easier for and simpler for new investors and companies to access the capital markets, नए product, gem board, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, सहूलत अकाउंट्स एक्सेट्रा। और अभी जो बात कर रहे थे आप लोग ESG पे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट एंड द कंट्री। दिस विल हेल्प टू बिल्ड ब्रांड पाकिस्तान ओवरऑल, और PSX इज वर्किंग एक्टिवली ऑन दिस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो आई विल स्टॉप देयर, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दिस ओवरऑल व्यू कि क्यों हमारी कैपिटल मार्केट्स ग्रो नहीं कर सकी and are of a size and playing their due role in the economy so far. Thank you, Ji. Thank you, Farooq. Thank you, Farooq. And Maheen, if we can have your perspective around the capital market, because you are bringing a new product, आपका product भी थोड़ा सा different है और capital market relevant भी है. So if you can share your perspective from a debt capital perspective. Sure, thank you, Sajid. I think what we are trying to do here at Infrazamin is assist in the deepening of the debt capital markets. And the reason that we look to do things like this is simply because without capital market participation in a wider scale in the economy, it is virtually impossible to get financing for the kind of infrastructure or other projects that need to come through in Pakistan. We've heard a lot of talk and a very good discussion around agriculture, around renewable energy, around internal productivity raising. So, these all require projects, research, and capacity building in order to really come to light. And I think one of the key things that we've been trying to do over the last year or so that we've been in operation is see where we can step in to support on the financial side to assist debt instruments to come more into the debt capital markets. And just to give you, a general example of that,
what we have found when we look at the way infrastructure projects, for example, and we've talked a lot about digital, and in digital, there is a tremendous amount of financing required, whether it is digital infrastructure, so telecom towers or fiberization, etc., or even whether we're looking at digital startups. The quantum of financing actually required in this is very large. And if we do not use our capital markets, we have, of course, the banking market, which has stepped up where it can in terms of infrastructure development. But ideally, the capital markets is where such infrastructure financing should be happening. And it is our hope that with the guarantee frameworks that we have on offer, we're able to develop those in a much deeper way. At the moment, the debt capital markets are exclusively focused on, I would say, two sectors. One of those is power, and the other one is related to the banking sector. And ideally, what we would like to see is to see digital companies, renewable energy companies, and so on and so forth, come to the capital markets on the debt side and even on the equity side to raise their financing requirement, because that does open up an entirely new pool of investors. It opens up new asset classes, and it certainly widens, what is available in the market in terms of access to finance. So there is a tremendous amount of work that still, needs to be done on the capital market side here to enable that depth to come through. But I think I'd like to touch a little bit also on renewable energy. Now, we've talked about renewable energy as a good to have, and ESR as a good to have. The reality is that these have now shifted to a must to have. You've heard about the economic issues related to the current account. The reality is that we import, almost $10+ billion of oil and fuel every year. And whenever there is a commodity super cycle, as what we are seeing today, we end up in a huge current account issue. Now, imagine if we were to actually, hold our renewable energy targets, and we would say, okay, if we're moving towards 20% in 2025, 30% in 2030, we could save up to almost $5 billion of fuel import. And that's half the fuel import bill that we're doing today. And I think if you look at Pakistan's requirement on the current account, it is actually in exactly the same range of $5 to $7 billion annually. That is what we go to the IMF for almost every second year. And it is now coming into a completely unsustainable cycle. So I think renewable energy needs tremendous focus. The World Bank back in 2020 highlighted that even if we manage to cover 0.07% of our available land into solar, we could cover almost 24,000 megawatts of electricity. And that for us in terms of consumption is actually huge. So I think that's a shift that the world is moving to. It's up to us to take advantage of the kind of capital flows that we are seeing internationally towards renewable energy projects, and try and shift away from that dependency that we have on fossil fuels. And I think we're well primed to do that. The second point I'd just like to touch upon is agriculture. And I think we've talked a lot about food security. Here's the challenge. While we have been looking at agriculture as project areas to support, the real challenge is that it's incredibly fragmented, very undocumented, and large-scale projects, whether they are in supply chain or in R&D or in seed research, they don't exist for the local market. So it is really up to local companies here and the government to work jointly in terms of developing that capacity in-house, so that we can actually push through projects that can then come to the capital markets for financing that are in large enough scale for both capital markets as well as the banking sector to pick up. So there are challenges within this space as well. It's important to recognize those. But, if there is a concerted effort to kind of decouple the political risk from the economic risk, through mechanisms such as the Charter of Economy or through consistent long-term policy making, which is what we've heard, then I think we will at least be on the path there. At the moment, we are unfortunately firefighting the same issues that we have been firefighting, I would say, for the last decade. And it is really time to get beyond that and think about a consistent 10-year policy framework, and then see how we can push all political parties to sign up for that, so that regardless of what political cycle we are going through, the economic cycle at least should sustain its path.
And I'll stop here and I'll wait for the rest. Thank you, Mahin. I'll pick up on the agriculture later. But let's hear from Dr. Amjad Saab. So he's not only leading the NBP fund, he's one of a very recognized economist as well. So let's hear from Amjad Saab his perspective around क्या हो रहा है इस वक्त capital market में और economy के हवाले से. Thank you, Sajid. So capital markets are just a reflection of the overall, economic political situation of the country. And in terms of political, we know that decisions have not been made on time. It's not only a question that oil prices nahi badhain, but we had reserves close to about $18 billion a year ago, and now they are down to $10 billion. तो हमारा import bill जब बढ़ रहा था तो हमें immediate steps लेने चाहिए थे. हम import duties बढ़ाते, हम जिस तरह अब कुछ items ban किए हैं, कुछ items early ban करते, कुछ currency को timely devalue करते. We did not, and उसमें $7-8 billion के reserves पिछले एक साल में हमारे से निकल गए, and it has put us in a very difficult position. If we look over the last few years, तो जो पाकिस्तान की debt to GDP ratio है वो 63% थी 2008 में, और वो gradually हर government में बढ़ती रही है, and now it has come to almost 90% of GDP. और हम जो external debt to GDP ratio है वो 41% पे आ गई है. Now these are alarming numbers for a country, a developing country like Pakistan, जहाँ पे interest rates भी इतने high हैं. Some people say कि जापान की तो debt to GDP ratio 250% है, हमारी 90 है, so what's the worry? जापान का जो डेट है वो ऑलमोस्ट 0% पे है. सो अगर आप देखेंगे कि वो जो जापान की जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसका कितने परसेंट है तो बहुत मिनिमल है. हमारा जो डेट सर्विसिंग है, इट इज नाउ ईटिंग अवे अबाउट 55% ऑफ आवर टैक्स रेवेन्यूज. तो फिर आपके पास पैसे कम बचते हैं टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर की भी बात हो रही थी. जब तक गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी, इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द प्राइवेट सेक्टर. तो अगर हम सिर्फ कहें कि जी चंद बड़ी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर से एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगी, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अभी एक बात हुई कि वी हैव चीप लेबर, द वर्ल्ड हैज मूव्ड टू स्किल्ड लेबर. ठीक है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन चीप लेबर. हमारे 5 करोड़ बच्चों में से 2.5 करोड़ बच्चे तकरीबन स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो 1.5 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे 5वीं जमात का बच्चा जो है वो उर्दू में सेंटेंस नहीं लिख सकता बेस्ड ऑन सर्टन स्टडीज. तो सिर्फ 1 करोड़ बच्चा 5 करोड़ में से जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहा है, जिसमें लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं, जिसमें 1000 रुपये महीने की फीस है, दे आर गेटिंग अ डिसेंट लेवल ऑफ एजुकेशन. So basically we need to improve, we need to start from the basics, क्योंकि बेसिक्स ही हमने 75 years में ठीक नहीं किए. हमने तालीम पे, सेहत पे, पॉपुलेशन प्लानिंग पर, इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया. पॉपुलेशन प्लानिंग की सिर्फ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश फॉर एग्जांपल हैज ग्रोन their population at 1.9%. We have grown our population at 2.7%. तो अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रेट पे ग्रो करते तो आज हमारी पॉपुलेशन 22-23 करोड़ नहीं होती, 15 करोड़ होती, 7 करोड़ लोग कम होते. तो 7 करोड़ लोगों को आपको तालीम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो इश्यूज नहीं आते. सो बेसिक चीज़ें पॉपुलेशन प्लानिंग पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, फोकस नहीं किया, हमने बेसिक एजुकेशन पे फोकस नहीं किया. तो हम बड़ी बातें तो कर सकते हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जब हम थोड़ा सा जाते हैं तो टेक्नोलॉजी में स्किल के इश्यूज आने लग जाते हैं. अगर आप देखें हमारे पास कितने क्वालिफाइड टेक्नोलॉजी के लोग हैं या इंजीनियर्स हैं, तो ऑब्वियसली बहुत कम है वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया में. बाकी दुनिया से कंपेयर नहीं कर रहा. वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स. जो स्टॉक मार्केट है उसका बहुत हाई कोरिलेशन है विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अगर आपने पिछले 20 साल की कोरिलेशन रन करें तो इट्स अबाउट 50%, एंड ऑब्वियसली इट्स नेगेटिव. कि जब रिजर्व्स कम होते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरने लग जाती है, बिकॉज आपका डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ने लग जाता है. इट्स बेसिक कॉमन सेंस. और वही हुआ है कि पिछले कुछ सालों में जब रिजर्व्स हमारे कम हुए हैं और ये हमारे ओवरऑल रिस्क बढ़े हैं, तो हमारी स्टॉक मार्केट ने पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया. So a lot obviously needs to done, but I think it has to start with the current account deficit, जहाँ पे हमें इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी इंशाल्लाह, बट उसमें टाइम लगेगा. सो इमीडिएट तो हमें इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है. उसमें करेंसी का रोल भी है, इंपोर्ट ड्यूटीज का भी है. इट्स वेरी क्रिटिकल. फिर बजट डेफिसिट, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि टचिंग ऑलमोस्ट 9% ऑफ GDP, विच इज द हाईएस्ट एवर इन दिस फिस्कल ईयर.
तो अगर हम इस तरह ही हर साल 8%, 7%, 10% ऑफ GDP तक बोरो करते रहेंगे तो हम कहाँ एंड अप करेंगे? सो इसमें अगेन जब हम बजट डेफिसिट की बात कम करने की बात करते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस हमेशा गवर्नमेंट के जाता है फर्दर टैक्स लगा दो। बिल्कुल ठीक है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, लगना चाहिए, रियल एस्टेट पे टैक्स कम है, लगना चाहिए, इन सेक्टर्स को आना चाहिए। एट द सेम टाइम जब कॉर्पोरेट्स पे आप टैक्स बढ़ाएंगे तो ये वही कॉर्पोरेट्स हैं जब ये आपको एक्सपोर्ट्स के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी दे रही हैं, टैक्सेस भी दे रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही हैं, इनको भी आप बैठा देंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम फर्दर टैक्स ना करें। ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स पे सब टैक्सेस मिला के 40 to 50% तक का टैक्स बर्डन आ जाता है। आज ये खबर थी कि एक सुपर टैक्स टाइप चीज़ कॉर्पोरेट्स पे भी आ रहा है, जो कंपनी ज़्यादा कमा रही हैं। नाउ दैट अगेन इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। सो अगर गवर्नमेंट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, ओवर टैक्स भी नहीं करेगी कॉर्पोरेट्स वगैरह को, और फिजिकल डिसिप्लिन रखेगी, मॉनेटरी डिसिप्लिन रखेगी, तो कैपिटल मार्केट्स खुद ब खुद बेहतर होने लग जाएंगी। there's a direct link. I think I'll stop here. Thank you, Dr. Sir. I think I'll bring a question back. Maheen, आपकी साइड से अभी आपने एग्रीकल्चर की बात की थी और प्रोडक्टिविटी की बात हो रही थी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे हमारे पास इस वक्त वेस्टेज कोई स्टैंड करती है 25 to 30%, whether we pick up fruit or whether we pick up the commodities or vegetable, जो कि सोइंग से हार्वेस्टिंग के दरमियान और हार्वेस्टिंग से मार्केट तक जाने के दरमियान हम लोग इस तरह के लॉसेस देख रहे हैं। And we yet to see an efficient supply chain system within the agriculture side. आप इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। Are you seeing companies coming up with the agriculture related infrastructure जहाँ पे वो इस सप्लाई चेन में थोड़ी सी एफिशिएंसी और थोड़ी सी सेविंग लाने की कोशिश कर रहे हैं? Are you seeing or working with some companies जो कि इस साइड पे काम कर रहे हैं? I think there are companies working at their own individual level, so to manage their own supply chains, whether it is upstream or downstream. Now, the challenge that we have seen is where does supply chain fit in? It is warehousing and it is farm to market, right? So the logistical supply chain and developing the cold chain. Before that, I think there is a tremendous need also to engage at the farmer level in terms of managing yield and managing actual quality of the output. And there, I think, because we have not invested in R&D in seed technology, which almost every other country in the world has been working towards. Pakistan's conditions are unique. We are not similar to India. We are not similar to Afghanistan. So our seed requirement is for our soil. And here we have seen many pilot projects come through, which are looking at developing that seed. But however, that development, unfortunately, sometimes just does not find the financing to get to scale and to actually then make an impact on wider hectares rather than just in that specific area. The second issue also, even at the farmer level and at the farm level, is mechanization. I think the simple thing is that we have focused heavily on tractors, but in terms of really looking at large scale mechanized farming, which could significantly increase productivity across the board, whether it is in wheat or whether it is cotton or any other crop that we look to get into, there is very little that type of mechanization. So both these areas we have been trying to focus on as well, in particular mechanization. Unfortunately, what we're finding is it's very, very fragmented. So it's very much in specific certain areas that you will find people willing to engage in that mechanized type of farming. Otherwise, I think there is just a need to do things the old way, which is why the need to really combine farmers together into some kind of cooperative where the benefits of moving towards better seed, better yield, what type of crops even should be farmed on particular types of land, and as well as using mechanization to improve overall productivity, there is an urgent need for that. Now, when we come again to actual infrastructure around this, so silos are a key sort of development area that we are looking at. Warehousing as well. Unfortunately, we have yet to see a project, whether it is developed in under a public-private partnership model or even a private company that carries the scale that is required to really make that supply chain effective
even within a provincial region. And that is something that I think that the engagement both at the government level and at the farmer level will be crucial. We have to understand that this is a very neglected sector for Pakistan over the last 2 decades. But until those conversations begin to happen, it will be very challenging to kind of bring all these fragments together in some sort of shape or form where an actual supply chain infrastructure for agriculture can be built. Thank you, Bain. Thank you. I think we can echo that one. Most of the people can really talk about that, the agriculture productivity. Like अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि Taiwan, Korea, Vietnam, China की जब भी हम example लेते हैं तो productivity gain and starting from a farmer engagement, that's where it starts. और अभी फारूक ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि ESG as a opportunity and the PSX is also working on that. So अगर हम कल को देखेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वहां पे भी ट्रेसेबिलिटी और ESG की कंप्लायंस की बातें आएंगी, जहां पे वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, लेबर, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड. सो उसकी मॉनिटरिंग और उसकी रिपोर्टिंग भी एक आ जाएगी, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से. फॉर कमिंग टू यू ऑन द ESG साइड, और अगर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसमें दे दूं कि इस वक्त बहुत से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं ग्लोबली, एज वेल एज अगर हम टेक्सटाइल की सस्टेनेबल टेक्सटाइल का इनिशिएटिव यूरोप में देखें तो दे आर ऑल क्रिएटिंग अ सर्टेन डिमांड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ESG कंप्लायंस को प्रूव करें, डेमोन्स्ट्रेट करें फ्रॉम आइदर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव और प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव. सो इस वक्त PSX के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ESG के किसी भी फ्रेमवर्क की अडॉप्शन के हवाले से, एंड देन वॉलंटरी और मैंडेटरी adoption for the companies to disclose that ESG related or sustainability related initiatives. जी सजीद, as you discuss हो रहा था, it is बहुत ही important area है ये, और इसके अंदर अपने PSX ने एक टास्क फोर्स सेटअप की है, क्योंकि देखिए ESG की एक्चुअली रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में इस वक्त वर्क इन प्रोग्रेस है, if we are completely honest. It is something जो इतनी आसान नहीं है रिपोर्ट करना. तो हमारी थिंकिंग यही थी कि सारे स्टेक होल्डर्स को जमा कर कर एक कंसेंसस डेवलप करें और पहले उसको स्टार्ट करें विद वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है आपको कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो, चाहे वो अच्छी इंफॉर्मेशन है, बुरी इंफॉर्मेशन हो, वो सामने आए तो तभी डेटा देखकर लोग अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे. So we are going to be moving towards that कि हम लोग voluntary जो है guidance issue करें, जो कि listed companies उनसे comply करना शुरू करें, and then we develop a roadmap अगले 3-4 साल का कि किस तरह उसको full regulation में लाया जाए, working with SECP, working with ACCA, ICAP, etc. मगर इसके अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जब हमने इस पे काम शुरू किया तो बहुत सारी हमारी बड़ी कंपनीज खासतौर पे और कुछ सेक्टर्स में जिस तरह टेक्सटाइल है, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट फेसिंग है वो कस्टमर के प्रेशर और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट की वजह से ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कंप्लायंस जो है वो स्टार्ट कर दी है अपनी ESG में. सो देयर इज अ गुड बेस जिसके ऊपर हम बिल्डअप करें. ऑलमोस्ट 30 बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान में नेट जीरो कोएलिशन को भी साइन किया है, जो कि COP26 के ऊपर हमने प्रेजेंट किया था. और मैं आपको बताऊं कि साउथ एशिया में प्रोपोर्शनेटली पाकिस्तान का रेशियो सबसे ज़्यादा था कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज. तो आई थिंक वी हैव अ गुड बेस टू स्टार्ट, और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है ये कि इसके ऊपर अगर हम इसको एज अ चैलेंज ना देखें, एज एन अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि जिस तरह हम कंप्लाई करेंगे, अगर हम इसमें इस रीजन में एक लीडरशिप रोल ले लेते हैं एज अ कंट्री एंड एज अ मार्केट, तो उससे जो हमारी एक ब्रांड पोजीशनिंग है और एक जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्लोज ग्लोबली जा रहे हैं ESG में, हम लोगों की पोजीशनिंग बहुत बेहतर हो जाएगी टू इम्प्रूव द ब्रांड एंड अट्रैक्ट दोज कैपिटल फ्लोज. क्योंकि आगे चलकर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को तो आप छोड़ें, इवन डोमेस्टिक कैपिटल फ्लोज आई वुड थिंक खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर वगैरह से will start demanding ESG compliance and ESG disclosure. Now, very rightly you picked up even from a domestic बैंक्स के लिए जो एक हम देख रहे हैं इस वक्त के उनके अपने जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उन बैंक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर आस्किंग दैट कि अपने
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और डेट पोर्टफोलियो में हमें दिखाएं कि आपकी ESG कंप्लायंस या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फोकस कितना है. यू आर वेरी राइट. सो नॉट ओनली द इंटरनेशनल वन, अगर गोइंग फॉरवर्ड 3 to 5 years में शायद हमारे डोमेस्टिक कैपिटल फ्लोज जो हैं वो भी काफी हद तक इससे लिंक हो रहे होंगे. I'm just coming back to you and picking up on the overall investment and the saving ratios जो हमारी हैं और इन्वेस्टमेंट की जो एसेट क्लास इस वक्त जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, अगर हम उसको देखें तो उसमें प्रायोरिटी आज भी शायद कैपिटल मार्केट नहीं नजर आती, रियल एस्टेट नजर आती है. इज इट द लैक ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, अवेयरनेस, और इट्स जस्ट द मैटर जैसे अभी व्यास और औरंगजेब साहब भी कह रहे थे कि रेंट सीकिंग और इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला एटीट्यूड है इसमें? जी, 2-3 फैक्टर्स हैं. एक तो अगर आप लास्ट 4 years 5 years में देखें तो स्टॉक मार्केट तो जनरली नीचे को ही गई है. रियल एस्टेट देखें तो इट इज़ डन वेरी वेल. अब एक ही मुल्क है, एक ही इकोनॉमी है, तो एक एसेट क्लास नहीं परफॉर्म कर रही, दूसरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. और इसके जो रीजंस हैं उसमें एक तो ये है कि स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, तो पिछले 3-4 साल में $2-3 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से निकाला और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर रही. अब फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स कम रह गई है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, तो होपफुली आगे जाते हुए वी शुड एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस. रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं थे, तो एक तो वो फॉरेन सेलिंग नहीं आई, इस वजह से रियल एस्टेट डिड वेल. फिर रियल एस्टेट में एमनेस्टी स्कीम आ गई और अब भी बहुत अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जो है वो रियल एस्टेट में जा रहा है. आई थिंक औरंगजेब ने भी थोड़ा मेंशन किया था, बट जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 8 ट्रिलियन रुपीस है इस टाइम, और जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 18 ट्रिलियन है. तो यू कैन सी कि कितना पैसा इस टाइम 44% जो मनी सप्लाई है वो आउट ऑफ बैंक्स है. लोग कैश लेके बैठते हैं, कैश डील्स करते हैं करोड़ों रुपए की रियल एस्टेट की. और फिर जैसे फरूख ने बोला कि उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन के भी इशू नहीं है. यहाँ तो कोई म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने आ जाए तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दें, आप अपनी ये स्टेटमेंट दें, वो दें, तो वो लोग वैसे ही घबरा जाते हैं. फिर जब एमनेस्टी के बाद रियल एस्टेट बढ़ने लग गई तो लोगों ने पैसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से निकाल के भी रियल एस्टेट की तरफ ले गए. हालांकि इसमें बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैं उनको पॉन्जी स्कीम्स बोलूँगा. हमने ऐसे एड्स देखे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान कि आप रियल एस्टेट में आ जाएं, डेवलपर्स कह रहे हैं 50% रिटर्न ले लें, 100% रिटर्न ले लें. और जब हमने चेक किया तो वो जो स्कीम्स हैं ना तो वो SCCP के पास रजिस्टर्ड हैं, ना ही वो CDA के पास, अगर कोई इस्लामाबाद की स्कीम है तो CDA के पास लिस्टेड नहीं है. सो बट वो लोगों से अरबों रुपए ले रहे हैं और लोग लालच में है कि जी हमें बैंक से या म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम मिल रहा है और यहाँ पे हमें 50% 100% के लोग कह रहे हैं. तो उससे एक बबल सा बन गया रियल एस्टेट में मेरे ख्याल में, और बहुत ज़्यादा पैसा चला गया. और खुदा न खास्ता अगर रियल एस्टेट में एक करेक्शन आई तो ये बहुत से जो डेवलपर्स हैं जो रेगुलेटेड नहीं है और भी पैसा ले रहे हैं, ये तो नज़र नहीं आएंगे और ये लोग सड़कों पे होंगे जो ना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है. सो देयर आर आई थिंक सीरियस कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है. जब हम इवन SCCP से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास मैंडेट नहीं है रियल एस्टेट को मॉनिटर करने का. तो मेरा ख्याल है देयर इज अ नीड ऑफ अ अथॉरिटी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लोगों को प्रोटेक्ट करे, जो लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमारे एड्स तो ऑब्वियसली SCCP अप्रूव करता है, अगर वहाँ पे जिस किस्म का मर्जी ऐड दे दें तो. सो आई थिंक लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और ये जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा उधर जाना, ये सब रीजंस हैं व्हाई रियल एस्टेट हैज डन वेल. फिर ऑब्वियसली टैक्स में भी वहाँ पे क्योंकि वो ऐसे ही डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उसमें टैक्स भी लोग नहीं देते. सो उसकी वजह से जो एक प्रोडक्टिव सेक्टर है, व्हेन यू से स्टॉक मार्केट तो यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, ऑयल एंड गैस है, बैंक्स हैं, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है. पैसा यहाँ नहीं जा रहा, पैसा कहाँ जा रहा है कि रियल एस्टेट में ब्लॉक हो रहा है. दैट इज वेरी अनहेल्दी फॉर द कंट्री. Thank you, Dr. Saab. I think I'll further that question with the REIT का जो मॉडल SCCP ने दिया था, which is very beneficial not only for the real estate like a housing society but otherwise infrastructure के लिए भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर SCCP ने अवेलेबल किया था so that the general public who has got a small chunk of money या small savings जिनकी हैं
وہ بھی ریئل اسٹیٹ کا بینیفٹ لے سکیں ان ٹرم آف دا ریٹرن. لیکن ہم نے بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کی یا ریٹ کی کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ کے لیے آ رہی ہو. تو اس پہ کیا ویو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ فاروق اسٹارٹنگ ود یو اینڈ then I'll come to other panelists later. جی سجید، ریٹ کا ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف اکنامک پروڈکٹیوٹی کی لحاظ سے مگر آلسو ان ٹرمز آف گریٹر ایکوالٹی آف ویلتھ، کیونکہ اس وقت اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ کے بوم میں یا ریئل اسٹیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو لاکھوں یا کروڑوں چاہیے ہوتے ہیں ایفیکٹولی ریئل اسٹیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو ریٹس ایک بہت امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایکچولی اٹس اسٹل ارلی ڈیز. میرے خیال میں اگلے آنے والے 2-3 سالوں کے اندر ہم لوگ اور دیکھیں گے ریٹس کمپنیز. آئی نو کافی ساری ریٹ کمپنیز آلریڈی فارم ہو کر ڈفرینٹ اسٹیجز پر ہیں ٹو ایکسیس دا کیپٹل مارکیٹس. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اسٹل اے بٹ ارلی ٹو سے کہ وہ چیز سکسیزفل نہیں ہوئی. میرا خیال ہے یہ چیز سکسیزفل ہو رہی ہے، اینڈ وی ول سی دا ریزلٹس ان دا کمنگ 2-3 ایئرس. کیونکہ کوئی چیز کو ڈیولپ کرنے میں، اس کا فائنینشیل کلوز کرنے کے لیے it takes a little bit of time. Takes time. Yeah. No, thank you, Farooq. I think اسی میں تھوڑا سا کوشچن کو ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. ایک تو ریئل اسٹیٹ ایز اے ایسٹ کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں، ریٹ، سو اس پہ ہمیں ایک کمنٹ چاہیے ہوگا. اور دوسرا آئی وڈ سجیسٹ کہ اب ہم اس کو وے فارورڈ کی بات کریں کہ اگر ہم نے وے فارورڈ ہے تو what are the top 3 things جو ایز اے چارٹر آف اکانومی اگر پولیٹیکل پارٹیز سائن کرنے کے لیے جاتی ہیں تو بزنس سائڈ سے یا انسٹیٹیوشنل سائڈ سے کس طرح کے کمٹمنٹ انسٹیٹیوشن سے آئیں گے اور کس طرح کی چیزیں وہ گورنمنٹ سے چاہ رہے ہوں گے. سو وٹ از دا وے فارورڈ اف وی ٹیک چارٹر آف اکانومی ایز اے ون آف اپرچونٹی؟ تو کیا چیزیں ہم اس چارٹر آف اکانومی میں دیکھنا چاہیں گے ایز اے بیئر منیمم؟ سو امجد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، then I'll come to Maheen, to you, and then Farooq. جی، سب سے پہلے تو دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اوبویسلی دا کی. ایک انڈیکیٹر ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ایبسنس آف وائلنس. یہ ورلڈ بینک اس کو کنٹریز کو ریٹ کرتا ہے، اینڈ وی آر رینکڈ 9 out of 149 countries in political stability and rule of and basically lack of violence. اور ہمارے جو نیچے ملک ہیں صومالیہ، مالی، سیریا، یمن، لیبیا، افغانستان. سو اب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی کہاں آئے گی جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، جب آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہے. آئی تھنک دس از ون آف دا کی فیکٹرز. اور کوئی بھی بزنس ہو، کیپٹل مارکیٹس ہو یا کوئی بھی ہے، تو فارن انویسٹر ہے یا لوکل ہے، دے لک ایٹ دیٹ ون فیکٹر. دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ ہم بہت زیادہ قرضے میں چلے گئے، اور اس کی وجہ سے بہت ایشو آ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی 55% قرضوں میں نکل جاتا ہے. ہمارے ریزروز بھی ختم ہو رہے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ کی وجہ سے کافی حد تک. تو ڈیٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ایک کوئک راستہ ہے، کوئک تو اتنا نہیں ہے بٹ دیٹ از دا وے آؤٹ کہ آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو کوئکلی پرائیویٹائز کریں. ٹھیک ہے، ایک تو ابھی جو گرانٹس اور سبسڈیز اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو مل رہی ہیں، دے آر اباؤٹ 1.2 ٹریلین روپیز پر ایئر، اور یہ تقریباً بنتا ہے کلوز ٹو $6 بلین جتنا ٹوٹل IMF کا پروگرام ہے. اور سو ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے بہت زیادہ، اس کو بھی بیچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو پیسہ ہے اس سے ہم اپنے ڈیٹ کو کم کر سکیں. ہمیں کسی طرح اپنے ڈیٹ کو کم کرنا ہے، جس طرح مینشن کر رہا تھا، اب اٹ از ناؤ 90% آف GDP. اور ہمیں کوئک موو کرنا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری ریٹنگ، کنٹری ریٹنگ گر گئی تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا ان کو پرائیویٹائز کرنا. اور ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آج سے 6-7 سال پہلے دین گورنمنٹ جو تھی وہ OGDC کے کچھ شیئرز ڈس انویسٹ کرنا چاہ رہی تھی، تو $2.5 پر شیئر کی آفر تھی جو انہوں نے ریفیوز کر دی. آج OGDC کا شیئر کوئی 40 سینٹس میں ٹریڈ ہو رہا. تو وہ ٹائملی ڈیسیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انفارچونیٹلی پرائیویٹائزیشن آج سے 10 سال 20 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور وہ نہیں ہوئی. بٹ اب تو یہ کریٹیکل ہو گیا کہ ایک فاسٹ پیس پرائیویٹائزیشن ہو. اور پھر گورنمنٹ تیسرا جو چیز ہے کہ ٹیکس پہ، خاص طور پہ جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں، ویدر اٹ از دا کارپوریٹ سیکٹر یا سیلیڈ کلاس، اس کو زیادہ ٹیکس کرنے کی بجائے اپنے خرچے کم کریں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ نان پروڈکٹیو ایکسپینسز اپنے کم کرے، اپنا سائز کم کرے،
बिकॉज जब आप टैक्स लगाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, उससे इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है, स्पेशली अगर आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स को फर्दर टैक्स करेंगे. तो आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स आई विल मेंशन. थैंक यू डॉक्टर साहब. एंड फारूक आपकी सॉरी महीन आपकी साइड पे हमारे एंड एक चीज मैं और आपसे इसमें ऐड करना चाहूंगा. कमेंट ऑन द CPAC एंड द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, और उस CPAC के लिए जो भी हमें वॉल्यूम्स चाहिए उस पे कैपिटल मार्केट कैन प्ले अ रोल. So Okay. what are the recommendation for way forward, or CPAC ko how you see CPAC as a one of our opportunity? Okay, thanks, Ajit. I think first of all, for a charter of economy, we all have to agree, and that is the country as a whole, the political parties as a whole, in terms of where we stand today and where we want to be 10 years from now. And if we can decide 3 or 4 pillars that we want for us to be competitive in, as Gas mentioned earlier, and if we believe that it's going to be digital, or renewable energy, or energy sufficiency, or agricultural or food security, and also business efficiency. So whether we're looking at the fact that pretty much almost every industry that we have in Pakistan today is actually working off some subsidy or the other, which begs the question of how competitive we really are. And how can we improve our business efficiency to looking at localized supply chains? Let's look at the context of the global economy today and realize that supply chains are disrupted everywhere, and more countries are looking to see how we can develop local supply chain security as opposed to consistently outsourcing from the rest of the world. If we can agree on these 3 or 4 areas that we wish to progress in over the next 10 years or so, then the building blocks of those come into play after that. We've talked a lot about our youth bulge and our labor productivity. And here's the reality, right? In order to achieve some semblance or some progress towards all of these sort of 4 or 5 areas, we're going to need a very different labor force to what we have today. And sometimes, just purely putting kids in school is also sometimes not a quick solution or an easy solution, because that's an 18-year process, or longer to get them there. So what are we talking about? We are talking about the existing band of, say, the youth of between 18 and 25, and how can we skill them in terms of digital technology, or even other areas that we've talked about, whether it's Agri or whether it's looking at other projects in renewable energy, etc. So our concepts in terms of how we intend to upskill our labor force is really going to come from these 3 or 4 areas. And we need to have that framework in place as to how we're going to do it. We talked a lot about digital, but the reality is today the digital world, whether it is the startup world or whether it is the infrastructure world, is suffering from a severe skill shortage. And that's a global phenomena. It's not just a local phenomenon, it's a global phenomena. It is very, very difficult to find the right qualified people to grow that digital space effectively. So that's an automatic roadblock that we're facing today. So in terms of charter of economy, it is fundamentally crucial that we first decide 4 or 5 areas, and then we see how are we going to push our labor force towards that direction. And finally, how are we going to find the financing to get to all these projects? And I think we have a capital markets, which has historically been underused. We have a banking market, which is selective in terms of where they lend. And what we have to do is see, it can't all be foreign capital. We have to see within the local capital availability, and there are tremendous amounts of pockets of liquidity. And all those funds do, or all those entities do, is really lend to the government in the form of treasury bills, etc. So we do have a big problem in terms of financing from government borrowing, crowding out the rest of private sector investment, right? Which is why we have a rent-seeking behavior, particularly when interest rates are this high. So I think we're going to have to agree on developing all of these areas. And as if that consensus can be built, then capital markets should not be ignored in that process. If you look at larger economies, they use the market not just for equity, but for debt. And they use it at various stages where financing may not be available. And I think, the PSX under Farooq has done a great job of bringing in a GEMS board for the smaller sessions, for the smaller companies. So lots to do. And I think plenty going on. But like I said, everybody has to be on one platform to figure this one out.
Thank you, Maheen. And I'll take final comment from Farooq. And Farooq, CPAC is also one of a component I would like you to maybe. जी जरूर सजीद, इन टर्म्स ऑफ द चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो 3 पॉइंट्स मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो टैक्स और दूसरी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, दे मस्ट सपोर्ट एंड एनकरेज द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर. इस वक्त ऑफन और बहुत सारे जगहों पर इट्स द ऑपोजिट कि जो पॉलिसीज है हमारी, और हमने रियल एस्टेट जो अनडॉक्यूमेंटेड है, कैपिटल मार्केट डॉक्यूमेंटेड है, उसी का एग्जांपल लिया कि हमारी टैक्सेशन और दूसरी पॉलिसीज एक्चुअली इनकरेज दैट अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर एंड डिस्करेज पीपल हु आर डॉक्यूमेंटेड. तो इट शुड बी नो सरप्राइज कि हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ती और हमारा कैश इन सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और दुनिया में इट्स प्रोबेबली द हाईएस्ट इफ नॉट द हाईएस्ट. सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सपोर्ट द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर विद इन ऑल पॉलिसी इंक्लूडिंग टैक्सेशन. दूसरा पॉइंट पे कहूंगा कि दे शुड बी अ मिनिमम एग्रीमेंट कि इतना बजट जो है वो सोशल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट होना जरूरी है, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और दूसरी चीजें शामिल हो जाती हैं. हम लोग आईटी की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री का एस्टिमेट है कि $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करने के लिए अगर वो सॉफ्टवेयर जरा हायर वैल्यू एडेड होए तो 25,000 ट्रेन स्किल लोगों की जरूरत है. अगर वो स्लाइटली लोअर वैल्यू एडेड होए, यानी कि कॉल सेंटर और इस तरह की आउटसोर्सिंग की, तो 50,000 ट्रेन लोगों की जरूरत है. तो अगर हम 5 बिलियन, 6 बिलियन और कई और 55-50 बिलियन की बात करते हैं आईटी की, तो वेयर आर दोस पीपल गोइंग टू कम फ्रॉम? वो इंडिया जो बेनिफिट ले रहा है, उन्होंने 60s में वो इन्वेस्टमेंट की थी अपने आईटी एजुकेशन सेक्टर में, जिसका वो आज बेनिफिट उठा रहे हैं. तो वी हैव टू डू दिस टुडे ऑन अ वॉर फुटिंग. अगर हमें 2-4 बिलियन से भी बढ़ानी है, 10-15 तो इंशाल्लाह आगे चलकर आएगी. तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारे सोशल सेक्टर में. तीसरी चीज मैं कहूंगा, और मे बी 2 पॉइंट से सेपरेट, क्या आई एग्री विद अमजद के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में. इट इज ब्लीडिंग अस ड्राई, और हम लोग सिर्फ देखते हैं. अगर आप इमेजिन करें, अगर स्टील मिल इस वक्त एफिशिएंटली चल रही होती पाकिस्तान में, तो फॉरगेट द मनी जो कि 100 बिलियन प्लस जो गवर्नमेंट उसमें हर साल डाल रही है, उसका इम्पैक्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में कितना होता है. बहुत ज्यादा. वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो हम लोग कहीं इमेजिन नहीं कर सकते, जो इनकैल्कुलेबल लॉस आ रहा है हमारी इकोनॉमी को. सो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज प्राइवेटाइजेशन और इसकी टैक्स बेस की इंक्रीज के ऊपर भी एक मिनिमम एग्रीमेंट आई थिंक होना चाहिए. और लास्ट पॉइंट में इस पे कहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हमें आई थिंक कोर्ट्स को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है. क्योंकि जो कोर्ट्स की डिसीजंस हैं, अगर आप देखें स्टील मिल की डिसीजन जो आई, आई मीन कितना, इट्स अगेन इनकैल्कुलेबल जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है उसका. कितने स्कूल्स, कितने बच्चे एजुकेट, कितने लोग उससे फीड हो सकते थे फ्रॉम दिस मनी. रिको डेक का जो डिसीजंस आई, so we have to agree on some methodology कि when courts look at such business and economic issues, तो उनको किस तरह की support चाहिए है to really assess the challenge. CPEC का जो आपने कहा, I think it's very interesting. CPEC का जो second phase है has to be driven by the private sector. पहले phase government to government था, उसके अंदर infrastructure develop हुआ है. Infrastructure doesn't pay for itself. अगर उसके ऊपर private sector activity होएगी तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे कर सकेंगे. तो ये सेकंड फेज के लिए दैट प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी इज एसेंशियल, वरना ये इंफ्रास्ट्रक्चर विल बिकम अनदर नूस अराउंड अ नेक. और उसके लिए जो है कैपिटल मार्केट्स का इंशाल्लाह इस्तेमाल होएगा, बोथ डेट एज माहिन सेड एज वेल एज फॉर इक्विटी, टू सपोर्ट दीज प्राइवेट सेक्टर सीपेक प्रोजेक्ट्स. Now, thank you, Farooq. Thank you very much, and thank you, Maheen. Thank you, Dr. Amjad साहब. I think अगर हम इस चीज़ को समराइज करें तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात है, आई थिंक वो ज़्यादा एलैबोरेट हो रही है, और वहाँ पे हमें स्टेक होल्डर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोर्ट्स हैं, शायद बिजनेस की साइड से और शायद सोसाइटी की साइड से भी. जैसे अभी फारूक ने बात की थी कि अगर हमें अपने बिहेवियर्स में कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है. अगर हम चीप लेबर की बात करते हैं और स्किल लेबर की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर अमजद साहब ने कहा था, तो स्किल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड पे होती है. एक अपॉर्चुनिटी टू develop a skill, and then the individual responsibility to use that opportunity in developing the skill, और फिर ethics और work ethics की बातें आना शुरू हो जाती है. So I would like to thank you very much to the panelists, and I'm sure I thoroughly enjoyed the conversation. और मेरा जो इस वक्त मैं comments देख पा रहा हूँ उसमें
बहुत से लोगों की जो इस वक्त ओपिनियन आ रही है, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट कैंडिड कन्वर्सेशन. सो thank you very much, and we will be catching up again later at some stage on the Charter of Economy, definitely. Thank you very much. Thank you, Sajid. Thank you. और अब हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे शौकत तरीन साहब ने, शौकत तरीन, सेनेटर शौकत तरीन, हु इज एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल. और आज की कन्वर्सेशन में हम इस चीज को फर्दर आगे लेके चलेंगे कि जो हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है और हमारा वे फॉरवर्ड. सो बीइंग एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड रेवेन्यू, आई थिंक देयर इज अ पॉलिसी जिसकी बात हो रही थी इससे पहले, और देयर इज अ सर्टेन कन्वर्सेशन जो अभी हमारी हुई हैं डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स के साथ और कैपिटल मार्केट के साथ. सो फॉर्मेट जो इस सेशन का होगा, वी विल गिव 15 मिनट जहाँ पे शौकत साहब अपने एक की नोट स्पीच डिलीवर करेंगे और हमें थोड़ा सा अपना ओवरव्यू देंगे इकोनॉमी के हवाले से, और उसके बाद देन वी विल एंटर इन अ क्वेश्चन एंड आंसर session. So welcome to session, Shaukat Saab, and we are grateful आपने time निकाला, and over to you. Thank you very much. I think it's a privilege to be here in this forum. I just heard few of the comments on, Charter of Economy. You must realize that I was the first one in 2010 who said that there should be a Charter of Economy. Now, let me talk about, Pakistan economy and the way forward. I think what we need is to have an inclusive and sustainable growth over a long period of time. Most of the countries which basically have progressed have achieved this over a period of 30, 40 years. And they've had, sustainable growth. We also want inclusive and sustainable growth. So what are those areas which we have to work on, and we have not been able to sustain our growth in the last several decades? One is our saving rate. Our saving rate is very low. It can only support around 3 to 4% growth at best. We also have a wide gap between our exports and imports. That puts pressure on our balance of payments when we start growing faster. We also have a productivity problem, whether it's agriculture or industry. So what do we have to do? I think we have to first increase the banking footprint. It's only 33% of our GDP. And then we need to give incentives, as Ajam Farooq was saying, for saving schemes. Unless we do not give incentives for saving schemes, it will be very difficult to encourage savings. To increase the banking footprint, I think we have to issue new licenses. I think we have to issue licenses, regional, provincial, and tell them to stay in their own areas. We issued 10 licenses in 1991. They all came back to Karachi. The head offices are here, and their regional their registers offices all over. So what has happened? The banking is actually, credit is done in only nine cities, 85%, and we get savings from all over the country. And when you don't give those guys back the credit, obviously there is no incentive for them to save. So that's the third thing. We also need to bring down the inflation. In a higher inflation environment, people tend to spend. We also have to reduce the cash society, which I think Farooq has also said, because our cash in circulation of deposits is around 42%. Doesn't make sense. And that is because I think we have too many black holes, whether it's real estate or agriculture or whatever. So I think you've got to plug them. So the second is the export and import gap. I think we've had exchange rate which has been manipulated and has not been aligned to the real effective exchange rate. Export industry is family driven and fragmented.
So they compete on price. There is no foreign direct investment in export. This is really surprising. If you look around, there are very, very few, industries which have some foreign direct investment. To my knowledge, they're almost zero. We have few products. 62% of our exports is textiles, and then spattering of few others. And we also have a very narrow geographic, focus, which is 64% of our exports go to European Union and US. So what is the way forward? The way forward is we should encourage China and Korea and others to come and populate our special economic zones. We have built the infrastructure. We spend money over there. Now is the time to populate them and with export-oriented industries. And I agree with the comment over there that we should now encourage the private sector to play its role. And private sector does not play its role. How can the government, basically encourage, the foreigners to come in? Then I'm a big believer that, we have to push our IT. Last year to, year before, our IT went up by 40 exports went up by 47%. So when they came to me, I gave them all the incentives. I said that you have to now start growing by 100%, after a couple of years, and we should hit $50 billion in 6 years. And I think that can be done. And I agree with Farooq and somebody, I think somebody else said that I think Farooq said that we need to train people. So I gave them money for the boot camps and to train at least 25,000, professionals every year to come out of the universities. And they came and they said that we need 3 billion rupees, and I gave them 6 billion rupees. And I said, next time will be more. I removed all the taxes on the exports of, IT, the freelancers, and I allowed them to money. So that was, so I think we also encourage that we basically have to have special technology zones. So that is one area which I am very bullish that we must push the exports of IT. Then we should consolidate the industry through private equity. And then and from where should we get the private equity? From these joint investment companies. They're doing nothing. They've got all our capital stuck up with them, and they're not even leveraging it. So we just get those guys to come up with the 50 billion rupees private equity, go to IFC, double it, and use that to consolidate all the industries which are family-based industries, and we should then sell them to foreigners at a discount. We also need to concurrently increase the traditional exports by giving incentives for value addition, product expansion, and geographic diversification. This is essential. I asked, Razak Daud, when you were the Commerce Minister in 1999, why didn't you, put emphasis on diversification? If you had done only 1%, I think in these 22 years, our reliance on EU and US would have been reduced to around 40%. So our way forward is that we should make sure that the gap between exports and imports, which is 12% today, we must reduce it to 6% in 5 years and remove it in another 5 years. Productivity in agriculture and industry. Our yields, are much lower than per acre yields are much lower than the neighboring countries. And we have to work on the entire value chain. This is not a question of one issue. The entire value chain has not been worked at. Nobody has invested heavily in the agriculture sector because food was being produced, they took it for granted.
Now, obviously, our population has expanded and we need, more food, and now we are short. So we have to work on the entire, kind of value chain. We should go for the commodity warehousing, cold storages, agri malls, and and then we also need to encourage e-commerce in agri businesses. We asked, HBL and their, agri department worked on, in 17,000 acres, the entire value chain. They increased the profitability of, those 17,000 acres by 116%, increasing the revenue by 20%, 22%, and reducing cost by 44%. The same thing should be done, by some other, banks. And we also went to China, and Imran Khan, Prime Minister, requested President Xi that agriculture is one area where they should help us, and he agreed. Now on the industry, I've told you that we got to maintain a kind of reliable and realistic exchange rate, because when we don't and the rupee is overvalued, then we get dumped by the other countries, because our products become their products become cheaper. We should remove all duties and taxes on the import of raw materials of our industry. I did most of it. I think the rest should be done. We should also remove the bureaucratic, impediments in functioning of the local industry, whether it is FBR or local governments or whatever. I think we have to reduce the bottlenecks and improve the kind of environment for doing business. We should also give some protection to our local industry, because overseas they are more efficient and they dump their products over here. We have to do that, and we have to ensure lower interest rates and availability of credit. When government takes most of the credit, the private sector is left with very little, and that credit then goes to few industries and not everybody. That, I think, is attention. Now to sustain, these are the three areas which have limited our sustainability. But then there are so many others where we have to work on. We have to, within all this, you will see that we have to work on increasing our tax to GDP, which is now around 10%. It should go to 18, 20% over the next 6 to 8 years. I think somebody mentioned, and I agree, that we got to control our fiscal deficit by reducing non-development expenditure. There's too much of money being spent at the federal level and the provincial level for non-productive kind of activities. We must also, over a period of time, move to targeted subsidies. Now we have a ESAS kind of database. We should use that database and give subsidies to the poor people if necessary, but targeted. We also need to pass on the expenses of what are supposed to be provincial expenses, which are being borne by the Federation after the 7th NFC. They must bear and I can tell you, the Federation bears around 650 billion rupees of provincial expenses. Shouldn't be done. Then privatization is a big animal. We got to privatize these SOEs, not only which are losing money, but even those which are making money, to enhance the productivity and to maximize the profitability. We should also, and this was mentioned, and I agree, we must also sell our state land. The authority has been made, which is National Asset Management Authority, has been put in place. I think we should leverage that. We have to make sure our energy sector becomes self-reliant and financially sustainable. Today it is not. Today, I think the next year of 1,450 billion of capacity payments we will have to make for the energy which we will not be using. This is unacceptable. I'm not going to. There are other things, but I'll touch on 2 or 3 other things. One is the financial sector. We all believe the financial sector is strong. No, it is not strong. It's a state sector. It is being now owned by states, and the states are running the financial sector like they're running their other businesses. This is a fiduciary responsibility that they should basically take the deposits and lend it to the businesses. Today, the ADR, asset to deposit ratio, is
less than, it's around 42%. It's a joke. So that has to, and I said that, I told you that the distribution of, credit has to be, in the entire country. And then, the products, 75% is corporate. Where is SME? Only 7%. Where is agriculture? Only 6%. I mean, so all this has to be revamped, and financial sector has to be made more efficient. Then, unless you don't educate people, unless you don't spend money on their health, and I will add that we should also spend money on family planning. Our population growth is, too rapid, and it's putting strains on our, resources. We also need to keep spending on programs what we call bottom up, the Kamyab Pakistan programs, the ESAS programs, the Sehat card programs, all those programs which basically will reduce poverty at the grassroots levels. We have started working, and they're very efficient, and we should do it. I think we started the reforms in our government, and initial results have been encouraging. If you look at the growth rate in the last 2 years, been 5.5% plus. Exports, basically have grown by 26%. Revenues are growing by 29%. I mean, if the crops, all the crops except this time, wheat was reduced by 1 million, but certainly higher than, previous year. So all these things happened. The industrial sector was growing, the agriculture is growing, the service sector is growing, and what we need is now continuity of these reforms plus more. Whatever I said, we would have followed that. But to start with, what we did was we actually did some planning. In June, July last year, we had plans for 14 areas of our economy. So unless you don't have plans, how can you guys go and execute? So I can probably in 15 minutes, this is what I can do, and I'll be open for questions. Thank you. Thank you, Shaukat sir. Thank you very much. And I think if I'll pick up इसमें जो अभी आपने themes की बात की, जो key areas की बात की, जहाँ पे improvement की बात है, मिफ्ता साहब ने भी यही बात की, OICCI की भी अगर हम बात करें, रियाज साहब ने, PBC and PBA के चेयरमैन औरंगजेब साहब की बात करें, उन्होंने भी यही गुफ्तगू की. फिर कैपिटल मार्केट से अगर हम महीन की, फारूक साहब की और डॉक्टर अमजद की बात करें, उन्होंने भी इन्हीं थीम्स पे बात की. एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जो यू आर राइट दैट back in the days you started with the charter of economy. So is it possible that charter of economy become a one single focus and उसमें जो bare minimum agreements है, जो आप भी कह रहे हैं exactly यही चीजें बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, क्या हम political differences set aside करके are we open to create a charter of economy जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेसेस और जो सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी है वो सोसाइटी डिस्चार्ज करे, जो बिजनेसेस की रिस्पांसिबिलिटी है उनका रोल डिफाइन हो, और जो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग वो डिफाइन हो. सो इज इट पॉसिबल अंडर द करंट सिचुएशन कि इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी को आगे लेके जाया जा सके? पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज वेरी टॉक्सिक. सो आई थिंक बिल्कुल होना चाहिए ऐसे. मैंने तो आपको कहा, आई वाज द फर्स्ट वन टू रेज दिस पॉइंट. दिस तो ये अभी जैसे ये आई बिलीव कि जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, इलेक्शंस हो जाएं, नई गवर्नमेंट आ जाए, आई थिंक देन बोथ साइड्स, whether PTI is in the government or in the opposition, PDM is in the government or in the opposition, if we all believe that this is the way to go forward, I think we got to set aside our political differences on few items. And if you see that, the Charter of Democracy has worked other countries. If you see in India, which obviously has also, political parties and they have differences, but Manmohan Singh gave them a roadmap, and BJP governments and then Congress governments, they've all been following those, that roadmap on few specific items. Why can't we do it? So my own sense is that yes, as of now, maybe in the next few months may be difficult, but maybe after the elections, and I think, the political party should also, in their manifestos, they should put this as one of the key
a kind of deliverables after the election. Okay, thank you, sir. And while the government is working on the budget side, and we are also seeing that there is a demand for election, but the budget has to come at some point in a May June right now. Is there any plan to contribute and get engaged in a consultation of that budget from your side or from PTI side otherwise? I think Shaukat साहब थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए. We will wait for him to come back. Meanwhile, keep bringing your questions. बहुत से सवाल जो हम इसमें कर सकेंगे वो हम यहाँ पे सवाल उनके साथ शेयर करेंगे. जो सवाल हम यहाँ पे नहीं कर सकेंगे, we hope that कि हम बाद में इसका कोई ना कोई आंसर जो है वो निकाल सकें. So we will wait for a few minutes. ले अभी तक की जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें जो चीज सबसे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है. चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी हुई है. सो चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज नॉट ओनली अ डॉक्यूमेंट, लेकिन ये एक आपके पास बेसिक पॉलिसी पिलर्स क्रिएट कर देता है जिसपे एवरीबडी कमिट्स और फिर अपने अपने एक्शंस और अपने अपने रोल्स के लिहाज से उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं. अगर हम बाकी कंट्रीज में भी देखें तो इकोनॉमी इज अ वन सिंगल एजेंडा जहां पे पॉलिटिक्स नहीं होती, जहां पे सारे लोग मिल के जो बेयर मिनिमम चीजें जो एग्रीड होती हैं उनके ऊपर मिल के काम कर रहे होते हैं ताकि बिजनेस को और इन्वेस्टर को और सोसाइटी को इन जनरल जो है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और पॉलिसी दी जा सके जिसकी बेस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स जो हैं उसको डिफाइन कर सके और वही चीज आगे फिर लेके चलती है. इकोनॉमी में जब भी चेंज आएगी एक पेन फैक्टर जरूर आएगा. ये नहीं हो सकता कि आप एक सर्टन चेंजेस या पॉलिसी बेयर्स लेने जाएं और उसमें एक पेन फैक्टर ना हो, लेकिन वो पेन फैक्टर किसके लिए है और कितनी देर कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करता रहता है, दैट्स द पॉइंट जहां पे आके सबको इकट्ठे काम करना पड़ता है. कोई जो ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर सकता है उसको वो बोझ उठाना पड़ता है, जो लोग वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते उनसे वो बोझ हटाना पड़ता है. सो यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर नहीं है या एक पार्टी नहीं है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. हमारे अपने सोशल बिहेवियर कंजम्पशंस के लिहाज से जो है वो भी रिव्यू होने की जरूरत है. बहुत से इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें आज हम हैं वो जस्ट नॉट बिकॉज कि कुछ पॉलिसीज गलत थे, कुछ हमारे कंजम्पशन पैटर्न गलत थे और गलत हैं आज भी, जो इनकरेज करते हैं बिजनेसेस को कि वो इंपोर्टेड आइटम्स जो लग्जरी आइटम्स इनको बार बार हम कहते हैं उसकी कंजम्पशन जो है पाकिस्तान में इनकरेज हो रही होती है. आज अगर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और हम अपनी इंडस्ट्री की साइड पे भी स्टैंडर्ड्स लेके आए कि मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का या प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली बहुत सी चीजें जो है आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में चली जाती हैं और लोकल इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. Meanwhile, let me check Shaukat साहब की availability. Meanwhile, आप अपने कमेंट्स प्लीज जो है हमारे साथ शेयर करें. अभी हम उनकी अवेलेबिलिटी शौकत साहब की चेक करें. बट मीनवाइल आई थिंक जस्ट टू समराइज दैट कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बार बार बात हो रही है और बड़ा कंसिस्टेंटली बात हो रही है. दैट्स अर्जेंट नीड फॉर द टाइम. लेबर की प्रोडक्टिविटी और स्किल की बात हो रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वर्सेस द स्किल्ड लेबर, और फिर उसकी जब आपने उसके साथ एक एक्सपोर्ट को लिंक करना है तो फारूक ने बड़े अच्छे तरीके से उसको इलेबोरेट किया था कि अगर आपने एक हाई वैल्यू आइटम की बात कर रहे हैं और आपने $1 बिलियन की सेल हिट करनी है या रेवेन्यू या एक्सपोर्ट हिट करनी है तो यू नीड 25,000 के करीब आपको एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होती है जिसके ना सिर्फ फंक्शनल या टेक्निकल स्किल्स जो है वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो कि इस वक्त डिमांड है, उसके अलावा भी जो उनके जर्नल एटीट्यूड है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए उन्हें हेल्प आउट कर रहे हैं.
उसमें जैसे शौकत साहब ने भी बात की, गवर्नमेंट का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, इंडिविजुअल का एक कंट्रीब्यूशन होता है, और इसके अलावा बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर बात हो रही थी ESG के हवाले से कि ESG जो है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया के लिए क्रिएट हुई है। COP26 में जो पाकिस्तान आल्सो साइंड अप फॉर दैट, और पाकिस्तान से 30 ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको नेट जीरो की कमिटमेंट को साइन अप किया हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी है जहां पे हम पाकिस्तान का ब्रांड बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन रीलॉन्च द इंडस्ट्री या अपनी प्रोडक्ट को एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन और ESG के लिहाज से, और वो हमें एक डिफरेंट काइंड की एक ब्रांड माइलेज देता है जिसमें हम नई मार्केट एक्सेस जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग बैक। हम इसी चीज को थोड़ा सा समराइज कर रहे थे। अभी जैसे आपने बात की, मेरा सवाल था उसमें कि जैसे इस वक्त करंट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट हु विल बी वर्किंग मई जून में जो काम कर रहे होंगे वो बजट पे काम कर रहे होंगे, तो इज देयर एनी प्लान जहां पे PTI अपना कंट्रीब्यूशन या उस कंसल्टेशन में एंगेज होना चाहेगी बजट के हवाले से? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? या आई कैन हियर यू सर। यार, मुझे ये आवाज आपकी बहुत कट रही है। खैर, इन एनी केस जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। सवाल जो अभी इस वक्त बजट का प्रोसेस शुरू हो रहा है उसमें PTI की साइड से कंसल्टेशन और एंगेजमेंट। आवाज कट रही है, मैं फिर से इसको डायल करता हूँ सर। थैंक यू। लेट मी डायल अगेन। सो मीनवाइल शौकत साहब दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज से नहीं होती, उसमें सोसाइटी और बिजनेसेस की अपनी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो हमें उस साइड पे भी गुफ्तगू करनी है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की साइड से एक एजेंडा नहीं आएगा, उसमें एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा सोसाइटीज और पर्टिकुलरली हमारी यूथ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो किस तरह उसको देख रहे हैं और किस तरह के इकोनॉमी को दे लुक फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड। सर, आप आवाज आ रही है आपको? और इसमें जैसे अभी डॉक्टर अमजद साहब ने भी बड़ी अच्छी एक बात की थी जिसमें गवर्नमेंट की अपनी जो नॉन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग है वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और एक चीज जो आई थिंक रियाज हाईलाइटेड वेरी वेल, और उसमें वी रियली अप्रिशिएट दैट, कि जब तक बाकी ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी जहां पे रेंट सीकिंग एटीट्यूड जो है वो प्रॉपरली रिवॉर्ड हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि इन्वेस्टर जो है वो किसी और साइड पे इन्वेस्ट करे जहां पे अपॉर्चुनिटी जो है या रिस्क जो है वो हायर साइड पे होता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज फॉलो द हायर रिटर्न का पाथ। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं इस वक्त? जी जी, अब मेरी आवाज आनी शुरू होगी। हाँ जी, जी सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। सो सवाल सर था एक फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव, लेकिन अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। पाकिस्तान ने ये बूम और बस्ट का साइकिल जो है बड़ा कंसिस्टेंटली देखा है ओवर द लास्ट इवन डेकेड से। हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं और हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो चैलेंज हो जाती है आइदर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और करंट अकाउंट के डेफिसिट की साइड से। और हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, उसमें आपने भी बात की। अब जब हम बात करते हैं इन सोल्यूशंस की, तो जनरल कन्वर्सेशन आज भी जो सारी हुई है उसमें सब लोगों ने इसी तरह के सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, वो हमें नहीं नजर आती उसमें, और वो मिसिंग लिंक नजर आता है। तो वो क्या चीजें हैं जो माने हैं जो इस चीज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं इस वक्त, इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन को? क्योंकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड है, सोल्यूशन भी आइडेंटिफाइड है, दुनिया में प्रूवन इकोनॉमिक मॉडल्स भी हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंसेस भी है। सो क्या चीज रोकती है किसी भी गवर्नमेंट को उन सोल्यूशंस को लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए? देखिए जी, पहली बात ये पॉलिटिकल विल जो है, ये सारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इस वक्त हमारे गलत कर रहे हैं। अगर हम लोग टैक्सेस नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि जिन्हों को टैक्सेस देने चाहिए वो नहीं देते। उसके बाद हम जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये रेंट सीकिंग है, वो हर एक को मिल रही है, सिर्फ गरीबों को मिलनी चाहिए, सबको क्यों मिल रही है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, जो पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए, दूसरा आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चाहिए। ये पहली दफ़ा मैंने 1972 के बाद प्लान बनवाए हैं। आपको हैरत होगी कि कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं था कि इंक्लूसिव प्लानिंग हो। जब इंक्लूसिव प्लानिंग हो और वो बेंचमार्क बन जाए परफॉर्मेंस ऑफ दोज मिनिस्ट्रीज और दोज एरियाज ऑफ इकोनॉमी,
اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو لے کے چلے اور کہے اس پہ ہم نے امپلیمنٹیشن ضرور کرنی ہے نو میٹر واٹ. کسی کے اگر پاؤں پہ ہمارا پاؤں آتا ہے تو آنے دو, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. دوز ٹف ڈیسیژنز. اب مجھے بتائیں نا, یہ جو ایس او ایز ہیں, یہ جو آپ کی خیر کسی نے 1100 بلین کی بات کی, 1100 بلین نہیں ہے اس وقت جو ہے. ٹوٹل آپ کا جو نیٹ جو لاسز ہیں وہ کوئی 150 بلین ہیں, کیونکہ آپ کے بہت پروفٹیبل ایس او ایز بھی ہیں. 500 بلین کے ہمارے لاسز ہوتے ہیں, لاس میکنگ کی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن کیوں ہوں بھائی, یہ جو ہے میں نے ایک بینچ مارک اسٹیبلش کر لیا تھا اس پاکستان میں کہ میرا جو حبیب بینک تھا 10 بلین کا لاس کرتا تھا 1996 میں, اور وہ ابھی 40 بلین آفٹر ٹیکس پروفٹ کماتا ہے. پروفٹ کر. تو آپ وہ جو ہماری یہ لاس میکنگ ہے ایک پروفٹ بنائیں گی, اور پھر بینکس لائک حبیب بینک, نیشنل بینک, اسٹیٹ لائف, یہ ساری اور یہ او جی ڈی سی وغیرہ, ان کی پروفٹیبلٹی زیادہ ہو جائے گی. So what we are doing is we are losing around 2 to 3% or 4% of our GDP. So یہ بہت مشکل ہیں فیصلے, لیکن ہیں, کر سکتے ہیں ہم. ہم نے حبیب بینک کو بھی تو ٹرن اراؤنڈ کر کے پرائیویٹائز کیا تھا, یونائٹیڈ بینک کو بھی تو کیا تھا. اس میں جو آپ اس میں دیکھیں گے جو آپ کے یہ ہے پی ایس او, اس میں امپرومنٹس آئی تھیں. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یو نیڈ آئرن ول. مجھے پتا ہے کہ میں نے جب کیا تھا تو مجھے اریسٹ کرنے لگے تھے ایک دن کہ میں بات نہیں مانتا تھا کسی کی. تو اس قسم کی آپ کو وہ ڈٹرمنیشن چاہیے. تو پولیٹیکل ول از نمبر ون, اینڈ ونس یو ہیو دی پولیٹیکل ول دین یو مسٹ ہیو پراپر پلاننگ. اور ورنہ ہے صرف یہ 3 چیزیں. سیونگ ریٹ آپ کا نہیں ہوگا تو آپ پھر ادھار لے کے کریں گے. جب ادھار لے کے کریں گے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ پھٹ جائے گا. تو آپ اس وقت دیکھیں نا, جو 7-8% پہ گرو کر رہے ہیں, وہ جس طریقے سے انڈیا کر رہا ہے اس کا 32% سیونگ ریٹ ہے, چائنا 42% ہے, ایون بنگلہ دیش از 28%, اور آپ 12-13% پہ پھر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہونی ہے نا یار, یہ تو کرنی پڑیں گی ہمیں. اور سر کیا چیز مانے ہیں جب ہم پولیٹیکل ول کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اور وہاں پہ جب اس طرح کے ٹف ڈیسیجنز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ کنسنسس, جیسے ابھی آپ نے ایگزیکٹلی یو آر ون آف کی انیشیٹر آف دیٹ چارٹر آف اکانومی, وہاں پہ پولیٹیکل ول جو ہے اس چارٹر آف اکانومی کی فارم میں, فرام اے پولیٹیکل پارٹی, فرام اے بزنس, فرام اے سوسائٹی, وہاں پہ وہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ آ کے تھوڑے سے کمپرومائز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈو یو تھنک جی وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ اس لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہی جو ہے ایک جو ہے 5,000 سے 10,000 فیملیز ہیں جو کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کی اکانومی کی رینٹ سیکنگ کی ہوئی ہے, اور وہی پالیٹیشین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, whether they are on the landlords or they are basically industrialists or whatever else. So ہم نے یہ جو ہماری لیڈرشپ کو شفٹ کر کے یہ کرنا ہے کہ یار دیکھو, ہم ان کو اگر یہ پولیٹیکل سپورٹ ہمیں دیتے ہیں تو یہ کسی وجہ سے ہمیں دیتے ہیں. should we be taking that political support from them when we know that they'll come back to us, or اور ہمیں کہیں گے یہ غلط کام کریں. تو آئی تھنک یہ اس وقت میں وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اس وقت شعور بھی آ گیا ہے. یہ جب ہو رہا ہے جو آج کل شعور بھی آ گیا ہے, آپ کی جو سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو ساروں تک آپ پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ان لیڈرشپ پوزیشنز جو کہ اپنی بزنس دیکھیں جی. میں تو بڑا سمپل میرا اصول ہے, if I am to do politics I should get out of business, and frankly میں نے اپنا بینک بھی بیچ دیا اس لیے کہ if I have to do business then politics no business. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم بزنس بھی کر رہے ہیں پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, and they think کہ ہم بالکل اوپر فرشتے ہیں کہ ہم اس میں سے اپنا کوئی مفاد جو ہے اس کو سامنے نہیں رکھیں گے. ہم رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اب اپنی جو پولیٹیکل لائف ہے اس کو بھی سدھارنا پڑے گا. سو ایک پولیٹیکل پروسیس, پولیٹیکل لیڈرشپ ایولیوشن جو ہے وہ گراس روٹ سے کہیں سے شروع ہونی ہے, جہاں پہ جو اکنامک انٹرسٹ ہے انڈیویجول فیملیز کے یا بزنسز کے, اور جو سوسائٹی کے لیے جو اور پاکستان کے لیے جو اکنامک ڈیسیژن ہے دیٹ شوڈ بی ناٹ کنفلکٹڈ. سو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا یہاں پہ ضروری. سر جسٹ اے لاسٹ کوشچن فرام مائی سائڈ, اینڈ دیٹس کمنگ فرام اے لاٹ آف the audience as well. آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے بجٹ میں, whichever government provide that's one,
डू यू थिंक कि टैक्स रेट कम होंगे गोइंग फॉरवर्ड, या IMF के प्रेशर की वजह से ये टैक्स रेट ऊपर जाने चाहिए? मैं तो देखिए, मैंने तो इस वक्त बस 6.1 ट्रिलियन करके दिया था। 300 बिलियन जो है वो सेल्स टैक्स की सब्सिडी दी थी ऑन ऑयल। तो इन इफेक्ट तो हमारा 6.4 बिलियन ही है ना, जो हमने किया है फ्रॉम 4.7 से 6.4 किया है। 1.7 ट्रिलियन हमने एक साल में बढ़ा दिया है। मेरा अगले साल का टारगेट था 8 ट्रिलियन का, लेकिन मैं 8 ट्रिलियन पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता और टैक्स रेट्स कम करता। मेरे नज़दीक जो मेरी फ़िलासफ़ी है, जो हमारी फ़िलासफ़ी है, वही है कि देयर शुड बी ओनली 2 टैक्सेस। All incomes have to be taxed, all consumption has to be taxed, and then there should be no other taxes, no withholding tax, no this tax, full and final। ये सब बकवास है, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन हर आदमी को टैक्स देना, जिसकी इनकम है उसको टैक्स देना ही देना चाहिए। और ये इस शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, विच मीन एग्रीकल्चरिस्ट, प्रोफेशनल, रिटेलर, कोई भी हो उसको टैक्स देना। तो वो जब हो जाएगा तो आपका टैक्स बेस जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आप जैसे जैसे रिड्यूस करना शुरू कर देंगे टैक्सेस को, तो आपके टैक्सेस भी बढ़ेंगे। ये लेफर आया था यहाँ, प्रोफेसर, उसने यही कहा था। उसने कहा जी आप टैक्स फ्लैटन करते जाएं, आपका टैक्स रेट, आपके टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, कलेक्शन बढ़, टैक्स बेस बढ़ जाएगा। No sir, thank you very much sir, thank you very much for your time. Apologies जो दरमियान में थोड़ी सी disruption रही है, but thank you very much for your candid conversation or your presence today. I think it's a lovely conversation. We would like to host you again some point of time, especially budget के हवाले से, और ये sessions जो हमारे economy के dialogues हैं, I hope that it will continue, और हम आपका इस पे contribution बार-बार request कर रहे होंगे। So thank you very much. My pleasure, and thank you for inviting me. Thank you. So now I'll invite Usman Yusuf for a vote of thanks, and thank you very much for the audience. हम थोड़ा सा we are running a little bit over that, थोड़ी सी disruption की वजह से, but now we have got Usman Yusuf for vote of thanks. Ji, thank you very much, Sajid, and thank you for running this excellent session. आज का हमारा मकसद यही था कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे की स्टेक होल्डर्स, हमारे लीडिंग पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, द पब्लिक एट लार्ज, वो सब लोग जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान की बका के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब आके बैठें. They gain some fresh perspectives and they can suggest solutions for the immense challenges that we all face as Pakistanis. जो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मल्टीपल स्पीकर्स ने एक बात को बार बार दोहराया, वो ये था कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से लेके गयास खान के बाद मोहम्मद औरंगजेब, फारूक, शौकत साहब, बियॉन्ड पॉलिटिकल डिवाइड्स ट्रेवर्स करते हुए लोगों ने एक ही बात की कि वी नीड ए कंसेंसस ऑन द नेशनल इकोनॉमी, वी नीड ए जॉइंट एजेंडा, ए विजन जिसके अंदर ना कि सिर्फ गवर्नमेंट हिस्सा डाले लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी, जुडिशरी भी, और हम सब मिलके इस विजन को साथ लेके चलें, so that Pakistan can emerge stronger. As far as nutshell is concerned, हम तो यही समझते हैं कि we are very bullish for Pakistan, and we hope that we will traverse all these challenges and emerge stronger than ever before, because resilience is in Pakistan's DNA. हमारी शुरू से, जब से हमें आज़ादी मिली है, we've been a resilient nation and we can cope with these challenges. Finally, a thank you note, Nutshell Group, and on behalf of Nutshell Group and Corporate Pakistan Group, I'd like to thank you all, thank all the participants today, starting with Sajid for hosting this dialogue. Thank you very much, Sajid. I'd like to also thank the Nutshell Conferences team who worked tirelessly behind the scenes to manage all of our events, including our virtual events and the physical events. Thank you so much. And most importantly, my heartiest thanks to Mohammad Asfar Ehsan, founder of CPG, CEO of Nutshell Group, whose commitment for Pakistan first really manifests in such events. Thank you all for attending and have a very good evening. Thank you, Usman, and that's where we close the session. So thank you, audience. See you later. Bye-bye.